माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सर बड़ी बुलंद आवाज है। I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting here today, the 7th of August 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Pharmacy Amendment Bill 2023 after it is passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and passing of the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 3 hours. Consideration and passing of the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, 3 hours. Further, the committee recommended that the 3 hours time allotted for combined discussion on the statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha on 20th July 2023 may be increased to 6 hours. The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Shri A.D. Singh, Shri Almaram Karim, Shri Waiko, Shri A.A. Rahim, Shri Raghav Chadha, Shri Derek O'Brien, Dr. John Britas, Shri Binoy Viswam, Shri Tiruchi Shiva, Dr. V. Shivdasan, Dr. K. Keshav Rao, Shri Sushil Kumar Gupta, to move the following resolution: that this House disapproves the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on 19th May 2023. Resolution has to be moved. Okay. Resolution moved. Yes, sir. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए. Motion moved. There are 3 amendments by Sri Tiruchi Shiva, Dr. John Britas, and Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? Dr. John Britas. Sir, I move. Shri Raghav Chadha. Sir, I move. Sir, I move. The statutory resolution, motion for consideration of the bill, and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi. Sorry. No. Good. I'll follow the procedure. Please bear with me.
Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please take your seat. Dr. Abhishek Singhvi. You are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Hmm. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this august House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this august House. As I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party at the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule two constitution bench judgments. Tried to overrule two constitution bench judgments on the status. Please. Good. The status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in three areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this august House, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately, it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy. And of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago. And hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of Tariq ki nazrein and he said, "Lamhon ne khata ki, sadiyon ne saza pai." Friends, we must also collectively oppose it because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew.
Then they came for me and for you. And there was no one left to speak for us. Friends, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत औहदा दिया, बनाया। ये ऐसा अध्यक्ष है दोस्तों, कोर्ट में दोनों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG,
And the secretary in the act itself, in the bill itself, says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the Council of Ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the Council of Ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow. A chief minister paralyzed, unable to act. Any minister shivering before his or her secretary. And the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing. And the LG, of course, looking up to the Home Ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर. This bill, friends, eliminates 2 out of the 3 interlocking, fundamental, distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly-based democracy, and therefore they hit at the very root of the basic structure. These 3 interlocking chains, which are discussed in 10 paragraphs of the Supreme Court judgment, I wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill, are: 1, a political executive through the Council of Ministers answerable to the people; 2, a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive; and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system. The bill simply eliminates number 2 and 3. Out of 3, it takes away 2. Friends, the object is not to make Hamlet the Prince of Denmark, not even the slave of Denmark, but to take over Denmark itself. It is to make Denmark a hollow shell, substitute NCT for Denmark. Its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely. In doing so, it eliminates the very concept of Westminster-style democracy, which Delhi is supposed to be fully Westminster-style minus 3 subjects only. The civil service, friends, after this bill will jump, bend, crawl, answer at the behest of an external agency, be it the Home Ministry or the Super Chief Minister. There is not even a token diarchy of powers between the CM and the LG. It converts an impartial civil service into a dictatorial civil service. Shame. It gives a real example of that forgotten serial which I love to watch and all of you have watched. Yes, Minister. The civil servant is saying only no, Minister. Remember what Nehru said about the ICS. That time, Indian Civil Service says this is neither Indian nor civil, nor does it provide service. I'm not sure how accurately it will apply in 2023, but I think he came very close to it. एक म्यान में 2 तलवार नहीं है ये केस. म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है. मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं सिर्फ. My third head of submission to this August House, friends. This bill seeks to amend the Constitution by an act of Parliament. The Constitution and the debates underlying it all wanted Delhi to have all powers minus 3. This bill adds a 4th to those 3, and it does it magically without a constitutional amendment. It is indeed magic, even if it is black magic, because you can amend a constitution without a constitutional amendment. 4th, decimating 2 out of the 3 prongs of a Westminster-style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure, because the basic structure of an assembly-based democracy includes these 3 interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner. The principle of decentralized federal government that has already been a part of the basic structure from the days of Bombay in 1993, around the time, by the way, when 239AA was created. If there is one animating bedrock philosophy underlying 239AA,
It is decentralized federal governance. Otherwise, why not keep Delhi as a mere large municipality under central government's control? अडवाणी जी हुआ करते थे बहुत बड़े अधिकारी ऐसे म्युनिसिपल सेटअप में पहले. Why not a mere union territory? You know, there are 10 of them. Delhi is the only one to have been given the constitutional status by a constitutional amendment. No other union territory. Why? Para 77 of the 2023 judgment partly answers that. I quote, "In the spiral of cooperative federalism, the Union of India must exercise its powers within the boundaries created by the Constitution. NCT Delhi, in having a sui generis federal model, must be allowed to function in the domain chartered for it by the Constitution. The Union and the NCT share a unique federal relationship. It does not mean that NCT is subsumed in the Union merely because it is not a state." ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. Friends, Delhi alone, out of 10 such territories, was given this constitutional status. Not only because federalism and the aspirations of the people of Delhi were recognized, but the idea was that you will not be able to amend it out of shape, out of character, without a constitutional amendment. You don't have it today. You have a statute. This arrogant government, and this is very interesting, this arrogant government first tried it by invading Delhi's special status in 2016 and 17. Forgotten now, by executive action without even a statute. We argued and we got a 2018 first constitution bench judgment, which struck it down. It did it again by a second notification without a constitutional amendment and lost it, and the judgment came in 2023, few months ago. But friends, unfortunately, there is no cap on deliberate foolishness. There is no bar to repetitive constitutional error. They have done this again. This time they've upgraded it from a notification to a statute, but still without a constitutional amendment. And even if this bill is passed, we're sure it will not be, the result will be the same a third time. History will repeat itself. Friends, constitutional stupidity masquerading as power is by no means a new phenomenon, especially when reason falls on deaf ears. The result is always the same: जिहालत, हिमाकत और नफरत. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है. और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें. क्योंकि अगर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा, मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना. आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं. आज आप केजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा, ये कायम रहेंगे कि ये अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है. तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. बल्कि बशीर भद्र को कृपया भूलिए नहीं. आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई. बशीर भद्र को उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है. तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए. Sixthly, friends, let me read some seminal words in the 2023 judgment. Now, these are going to take a little bit of time. It's a longish quotation, but it's very important for this house. 10 paras, and I'm only reading selectively, of the Supreme Court. It's completely forgotten. I'll read a little quickly and fast. This is a unanimous judgment, not a single dissent. And these words have been ignored, and they are not my words. Even though it's long, pardon me, allow me to read it. It's the highest court of the country.
In a democracy, each word I'm reading is a quotation, and I can assure you these words will come to haunt you. In a democracy, accountability lies with the people who are the ultimate sovereign. The cabinet, consisting of elected representatives, is collectively responsible for the proper administration of the country and is answerable to the legislature for its actions. The government is responsible for the decisions and policies of each of the ministers and of their departments. This creates a multi-linked chain of accountability, where the legislature is accountable to the people who elected them and the government is collectively responsible to the legislature. It's quite amazing. Collective responsibility is an important component of parliamentary democracies. The day-to-day decisions of the Council of Ministers are to be implemented by a neutral civil service under the administrative control of the ministers, in order to ensure that the functioning of the government reflects the preferences of the elected ministers and through them the will of the people. It is essential to scrutinize the link of accountability between the civil service professionals and the elected ministers who oversee them. Under the Westminster parliamentary democracy, civil service constitutes an important component of a triple chain of command that ensures democratic accountability. हर शब्द की धज्जियां उड़ा रहा है ये बिल, हर शब्द की. The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to the ministers, ministers are accountable to parliament, and thirdly, parliament legislature is accountable to the electorate. An unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem for governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy, may act in ways that disregard the will of the electorate. In federal polity, a fundamental question arises is which would be the more appropriate authority to civil service officers would be accountable. Everything which the bill is saying is dealt with here. In a democratic form of government, only one more para is left, friends. The real power of administration must reside in the elected arm of the government, subject to the confines of the Constitution. A constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted with its domain, then the principle underlying triple chain of command of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold account the office posted in service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers, who in turn report to the ministers. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibility is affected. Therefore, GNCT ought to have control over the services. Now, I know there's a statute, I'll deal with their best defense, which has been raised by the government. But first, I've read you 10 paragraphs. For the interested, from 102 to 111. Clearly, friends, this bill is therefore, in the light of these paragraphs, stillborn. It cannot remove the basis, which is this of the unanimous constitutional judgment. These quotations I have just read are bedrock principles. This bill is simply providing provisions directly contradicting these bedrock principles. It cannot simply nullify a unanimous constitution bench. It must at least amount to removing its basis and rendering that judgment inoperable. I have just read to you passages which are impossible to remove the basis of. These are bedrock principles. How do you remove the basis? It is therefore trying to overrule directly a Supreme Court judgment. It therefore is an impermissible constitutional exercise if you try to nullify a Supreme Court judgment without removing its basis. It is not only does this bill insult the people of Delhi, it insults the Supreme Court. It insults our intelligence. कभी दिल में ख्याल आता है कि जैसे 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चुनाव रखे थे, लेकिन पावर नहीं रखा था कुछ भी. क्या यही कॉलोनियल मॉडल का आप कार्यान्वित कर रहे हैं आज इस बिल द्वारा? हम आपको चुनाव दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं. Is this not an illegal power grab through the back door? Yes. Now, seventhly, friends, I come to the main defense, the only defense of the government. Because you should know this, how wrong, fallacious it is. It is based on clause 7A and B of the article. Can I just read? None of you need to be lawyers to understand this, the text of the, and you'll get the answer automatically. This is the entire defense. Parliament may by law make provision for giving effect to or supplementing, mark the word, for giving effect to or supplementing
the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto. Friends, these words on bare text mean that to reinforce, operationalize, effectuate and implement the earlier provisions, which provide the entire architecture for Delhi, Parliament can make laws. This was a provision put so that every time something is to be made to fill a gap, to plug a hole, you don't have to have a constitutional amendment. Parliament is sufficient to plug that hole, to reinforce the Delhi's architecture. Friends, the short point is, can you destroy or decimate that architecture and structure by resorting to a provision that says that the power is exercisable to reinforce it or implement it? ये इस प्रावधान के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? 7A and 7B were created when implementing the true letter of you could reinforce or plug the gaps without amending the constitution. It can never be used to destroy, to supersede, to bury that architecture itself. If this ridiculous interpretation is accepted, does it mean that by this brute parliamentary majority, today you have transferred services to the central government? Tomorrow you will do this for each item: electricity, parks, highways, Waqf board, labor board. Then why not have Delhi as a municipality? Why create the constitutional architecture? And that too by using clause 7, which says supplement, reinforce, implement, incidental. At the end of para 46 of the 23 judgment, which nobody appears to have read, as far as the bill makers are concerned, it says again, interpret the phrase insofar as such matter is applicable in a manner, insofar as such matter is applicable to union territories, in a manner to exclude a greater number of entries than what is already excluded, that is in 3. It will defeat the very purpose of granting special status to FCT. This is the Supreme Court in para 46. In other words, friend, this government, like Alice in Wonderland, says words will mean what I say they will mean. That's their interpretation of 7. I will use 7 as a Brahmastra, not to supplement and implement 239AA, but to supplant it, to reduce it to vanishing point. The scalpel created to heal, to cauterize, to cure, to fill gaps, to make you more healthy, will now be used to stab and kill. Obviously, only Alice in Wonderland in this government is on the same page on this. दोस्तों, ये सब प्रावधान जैसे क्लॉज 7 है और इस तरह प्रकार के प्रावधान कई जगह होते हैं, आम चीज है, लोगों की आवाज को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए है, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके लग दिया है। संविधान को इस प्रकार से विकृत करेंगे आप तो परवीन शाकर के शब्द पूरी तरह से लागू होंगे। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की। अब संविधान वाली किताब की बात कर रहे हैं। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब का मगर क्या तूने हाल कर दिया। Those in the treasury benches adopting this are actually distorting it out of recognition. The fundamental error of the central government and of the Honorable Home Ministry is to confuse the existence of power with the validity of its exercise. For the last several days, we've been hearing curtain raisers coming from the Home Ministry that we have the power. We are not talking about competence. The question is, if you have the power, its existence is subject to substantive limits. 3-4 minutes more. What you do not have is the power to cross the Lakshman Rekha, which this bill is designed to cross. The question of competence to pass a law, which I am not at all addressing here, is quite different from whether the law is a valid exercise of such competence. Not when it violates the basic structure, not when it violates substantive provisions. Friends, the bill is designed to violate specifically all those substantive limits. This is beyond the remit of any statutory bill. Whether even a constitutional amendment can do it, we will see when they bring a constitutional amendment in a 4th round. But the statute being lower than the constitution must go.
The constitution is itself challengeable if it violates the basic structure. That has not come. Turning now to my eighth head, finishing quickly, just give me a few minutes more. It is convenient to forget, and this you'll be interested to know. Now that we are having a bill, we tend to forget this. There were no exigent circumstances on 19th of May when you passed the ordinance. Supreme Court said in 100 judgments, you must demonstrate how court necessary to take immediate action. Immediate necessity is distinguished from mere desirability. These are not my words, the Supreme Court. Expression necessity coupled with immediate action conveys the sense that it is imperative due to an emergent situation to promulgate an ordinance. Now I want to tell you, on 11 May, 2 महीने जिरे और बहस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया। 6 दिन बाद 17 मई कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन पारित नहीं किया, घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे 2 दिन बचे हैं अभी उच्चतम न्यायालय के बैठने के लिए। 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय अवकाश में जारी थी। The revised time given to you by the LOP was 1 second. Some of my friends here are prepared to donate some time. 30 minutes. You have left only 13 minutes for Mr. Chidambaram. 2 minutes more. 2 minutes. So you will leave 11 minutes for him. Yes, yes. And there are other people to donate time to us. There are other people. On 19th May. 1 second. इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रहने के ये जरूरी है कि बहस अच्छी हो रही है। बहुत दिन के बाद बहस अच्छी हो रही है, सभी लोगों को सुनने में आ रहा है और नॉलेजेबल है, तो आप कंसीडर करिए, आपके हाथ में है, और एक 10 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए। Every minute used by you, doctor, will cut into the time of Mr. Chidambaram. No, initially both were given equal time. Then his time was increased. माननीय अध्यक्ष, Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, Last 1 minute. 17 तारीख को ये पारित हो, ये अप्रूव हो गया कैबिनेट द्वारा। इसको आप 19 की शाम को 5 बजे के बाद जब मैं घर जा रहा था कोर्ट से क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 19 तारीख लास्ट डे था कोर्ट प्रोसीडिंग का, उसके बाद अवकाश थी। क्या you wait for 2 days fearful that the Supreme Court is sitting till 19th May? Is this not cheap tactics and chicanery at its worst? The deleterious effects of this ordinance were visible in the last 2 or 3 months it's been there. Governance is at a standstill. 2 bureaucrats are threatening to take majority decisions over the chief minister's head. The LG daily trespasses in all domains of elected reps. Heads of bodies funded and operated by NCT are approved and controlled by the Home Ministry. NCT is reduced to a fiefdom of the central government. Insubordination is at its peak. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूं 1 मिनट में। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी-कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग। मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे। और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है ये बिल, ये प्रस्तावित कानून। चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दुख और आक्रोश का हाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि
कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर, तो मैं भी कहना चाहता हूं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया, बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं, सॉरी गुजरात मेंबर्स का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No, no. Yes, I am coming to that, sir. Let me Do not get into disruptive mode. Dr. तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में। अरे साहब बहुत सारे शेर बोले थे, ऑर्डिनेंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। I will have to name you. देखिए इनकी I will have to name you. कि You have got it as अरे a साहब क्या habit. शिद्दत दिख to रही rise and है make a एक दूसरे को सपोर्ट करने में। देखिए इनकी स्थिति ये We want decorous debate here. Doctor said many things. Maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए, देखिए संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में
कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164 एफ को पढ़ें तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को सभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे लोग बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित है। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है। यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा
तो वो मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वो एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक नैतिकता, सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं। मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगी, उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है, अब जो तेरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे, उससे पार्टियां सैकड़ों करोड़ के आलीशान मकान में रहती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया, उनके ऊपर भी एक आघात है। और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया। और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी की सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 70 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में, उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय, क्या इन्होंने संसद के द्वारा कानून के खिलाफ सभा में दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर दी 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर।
तो मान्यवर ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में ना ऊपर वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सम्मान है ना नीचे वाली, क्योंकि चंद महीने पहले तक तो ये एमसीडी से भी लड़ते थे और दिल्ली से भी लड़ते थे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो मेरे विचार से तीनों गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र से अधिक संवैधानिक शक्ति इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विषय के ऊपर किसी और की नहीं हो सकती। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड की संवैधानिकता की बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पे प्रदर्शन किया था। मैं बताना चाहता हूं जिस समय इमरजेंसी लगी थी तभी हमने 15 अगस्त और 20 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं बहुत आगे लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं, इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए। और फुल स्टेट से सुपर स्टेट की दौड़ में मुझे डर इस बात कि मेंटल स्टेट में भी ना पहुंच जाए कहीं, तो कोई आश्चर्य की नहीं हो सकती है। और यह बात इसलिए कह सकते हैं कि 49 दिवस जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार पार कराई थी, उसके बाद अगर आधारित इनका लोकपाल विधेयक देख लें तो उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए, अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका अध्यक्ष संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा। मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचार के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा अपने संविधान के बारे में करिए। और यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी, हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज स्थिति यह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर यह दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता, पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इस बात में तो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है। इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में। महोदय मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 बने, 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है, और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इनका कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, वैक्सीन तो छोटे, पैरासिटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है, अरे भाई वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें
इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है, वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, वो यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पे समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया। कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे, 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone. I cannot shout. No volume. No volume here. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problems, sir. Good. Some problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, which negates a constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance has been challenged in the Supreme Court, and the matter has since referred to a constitution bench. During the pendency of the matter before a constitution bench of the highest court of the land, the government has introduced this present bill to repeal the ordinance and for further amending the GNCT Act 1991. I wondered as to whether heaven would have fallen had the government waited
for the outcome of the Constitution bench where the ordinance is still pending. What is the urgency involved in the matter? What is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which have been received just now after the introduction of the bill, that the aforesaid judgment, that is judgment dated 11th of May, posed certain challenges in the efficient administration of the government of NCT of Delhi, which needed to be addressed through appropriate legal interventions. According to me, this is a stigma on the highest forum of our judiciary, which must be deprecated by all conscious citizens of this country. Sir, in the year 2021, in the matter of Madras Bar Association, the Supreme Court held inter alia, and I quote one line, "A legislation can be declared as unconstitutional if it is in violation of the principle of separation of powers, the rule of law, and Article 14 of the Constitution, that is arbitrariness." Therefore, once there is such a judgment, which was delivered in 2001, government ought to have abide by that judgment of Supreme Court, which is otherwise a requirement under the Constitution. I am coming to that later on. Sir, the question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in list 2, except the matters in entries 1, 2, and 18, which is public order, police, and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the GNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the GNCT legislation by the Constitution, because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted through this bill. So 3 will be 4, rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singh Vichi. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239 AA3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring, if they wish, because this legislation will be null and void. As a student of law, I understand. It will be done. But if the government at all in future brings a constitutional amendment bill, that will also hit by this, the principle of separation of powers, and federalism, which are the basic structures of the Constitution that was held by the Supreme Court right from the Keshavananda Bharati case till Minerva Mill case. Bill, or this bill seeks to render the GNCTD Assembly, or for that matter the Delhi government, virtually toothless and ineffective insofar as the services and service commission are concerned. Even a constitutional bill on this score shall be unconstitutional ab initio, as it negates federalism and separation of powers, already stated by me. Sir, now let me have a look at the bill once. Possibly that will be the final, because 7 minutes already elapsed. Come to part 4A. It says about provisions relating to the maintenance of democratic and administrative balance
governance of national capital territories of Delhi. What a brilliant drafting. To maintain a balance, the original act came into being in 1991. We are in 2023. So for the last 33 years, there was no balance. There was no balance. That is why, all on a sudden, the Kumbhakarna has risen from the deep sleep to maintain a balance. Interestingly, the authority has been proposed to be created. Which authority? Already stated by other members. The Chief Minister, Chief Secretary, Home Secretary. Sir, please give me to this. Please give me to this. Very interesting bill. Chief Minister, Home Minister, Chief Minister, Chief Secretary, and Home Secretary. And whatever may be recommended by the Chief Minister, if it is not accepted by the two bureaucrats, then also it will be passed and the Lieutenant Governor will accept it. So, Chief Minister will be, what should I say? What should I say? Without any authority. He does not have any authority. The bureaucrat will prevail upon him. Sir, in democracy, will of the people is supreme. Vox populi, vox dei. Sabar upore manush satya tahar upore nai. Will of the people. But here, the will of the people, which has been reflected through election, the duly elected constitutionally elected government, his Chief Minister has no power. The bureaucrat will overrule the recommendations of the Chief Minister. This is a draconian bill. This is against all spirit of the Constitution, and every citizen of this country should oppose this bill in the manner, not only inside Parliament, even outside Parliament, voice is to be raised. Sir, finally, with your kind permission, I would like to quote from judgment online of former Chief Justice Y.V. Chandrachud, the father of the present Honorable Chief Justice of India. Quote, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic and essential features. Here is a case where the basic features are being destroyed. And sir, according to me, according to my party, All India Trinamool Congress, this government seeks to insert entry 41 of the list 2 into Article 239A3A, thereby expanding the scope of accepted matters, so that the bill virtually stands against the heaven of freedom into which Rabindranath Tagore wanted his country to act, as he reflects the abyss of unrestricted power to ensure emergence of a banana republic. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva, 14 minutes. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I stand to oppose this bill very strongly, for it infringes upon the basic structure of doctrine by crushing the federalism, which is the soul of Indian democracy. Sir, this attempt of this government is yet another a strike on federalism. It is unwarranted, untenable, it is undemocratic, unjustifiable, unfederal, and unconstitutional. Why I am saying all these things? Unwarranted. Sir, after 1991, when the Delhi was granted special status, BJP came to power. Madanlal Khurana and later Sahib Singh Verma, who were the chief ministers, they insisted for full statehood for Delhi. And later, sir, in 2003, August of 2003, the NDA one government introduced a bill insisting for full statehood for Delhi. So when they are ruling, they want full statehood for Delhi.
then what necessity for this ordinance or this bill, sir? After 2015, Aam Aadmi won the election with a significant margin. Immediately after that, the union government issued a notification that services will come under the control of the union government. And that sparked a legal battle, sir, which lasted for 8 years. And recently, the Supreme Court in 2018 and 2023 constitutional bench has given a unanimous judgment in favor of the Delhi government that have now this bill is attempting to overturn the Supreme Court judgment and override the powers of the state government. Sir, we should just look at it in this manner. So whenever they are in double standard, when they are in power, they want something. It is intolerance, to say very shortly, if an opposition party is ruling, they will be disturbed by the governors. If it is a union territory, the lieutenant governor will take all the powers and will not allow the state government to function. So in this situation, where is democracy? Sir, our constitution, as you know very well, sir, has given a structure of federalism, which gives the very importance to the regional aspirations can be represented and realized by state governments, and which cannot be done by a centralized union government. Sir, it has also established a mechanism of triple chain accountability. The people hold the legislators accountable, the legislature holds the government accountable, and the government holds the officers accountable. But now, officers are not under the control of the government of union territory. So what's the use of being there? So this triple chain accountability is broken by way of this attempt. This not only I say here, sir, the Supreme Court has also emphasized very strongly. It should not be severed on any. Sir, now coming detail into the bill. Why we are opposing? What are the contentious issues? What are the reservations we have? All others have spoken, sir, but we have to enlighten it. So, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the union government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment, which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because even if the authority with a majority gives a session to the governor, he can get it. So ultimately it goes there. The authority becomes redundant and the chief ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words. A chief minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate given to him. But whereas he is not able to have control. So Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? The government which is accountable to the people, to the legislature, and the government which can hold the officers accountable, now they don't have any control over the officers. Number 2, sir, the Council of Ministers, the Cabinet. Earlier, sir, the notes which are prepared by the ministers. And it will be taken over there. And after the decision, it will be forwarded to the Lieutenant Governor. It is vetted by the Law Department. Now that the Secretary will overlook the minister, and overall, the Cabinet, which is the Council of Ministers, if they take a decision, the Chief Secretary will come, it doesn't come under rules of procedure, and he take it to the Governor who audit it. So, Chief Minister became redundant, the Council of Ministers become redundant. Number 3, sir, any minister, if he takes any decision, the Secretary doesn't agree with the decision of the minister concerned, without the consent of the minister, he can take it directly to the Chief Secretary or to the Lieutenant Governor,
So the ministership also becomes redundant. Number 4, sir. Delhi is also like other states run by some 50 around statutory authorities, corporations and commissions. This include industry, tourism, everything. It comes under even transport, water, sewerage, women rights, child rights and all. All these positions, the chairpersons and the members were earlier nominated by the government, by the lieutenant governor on the advice of the government. But now, sir, hereafter, these positions will be appointed only by the lieutenant governor. The government has to sit with folded hands. Sir, one by one, just authority is established. The authority has no say, and even in the authority, the chief minister has no say. Number 2, the council of ministers, the cabinet becomes redundant. The minister becomes redundant. Number 4, sir, all the commissions, all the corporations, all the statutory authorities will be appointed by the lieutenant governor. And then proroguing and summoning also comes to the power of the lieutenant governor. Earlier, sir, the council of ministers will decide a date and they will represent to the lieutenant governor and he will summon. Now that lieutenant governor can do. So the government cannot, if at all an urgent issue has to be resolved, if the assembly has to be convened, the chief minister or the council of ministers has no power. Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people. They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. Sir, let me quote Dr. Baba Saheb Ambedkar. Ambedkar, in November 4, 1948, this bill disregards the constitutional morality. That's what I'm trying to drive at. Dr. Ambedkar on November 4th, 1948 in the Constituent Assembly, quote, while everybody recognizes the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it, which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of administration has a connection with the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution. Sir, underscore. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution. Sir, it is not a statement of criticism. Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. And emphasizing that the Supreme Court in its judgment in 2018 refers to the Constitution in these words, quote, constitutional morality is that fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, as experience has shown that unbridled power without any checks and balances would result in a despotic and tyrannical situation which is antithetical to the very idea of democracy. Sir, what is going on now? Unbridled powers without any checks. Everything is taken over. Sir, we are told now and then, again and again, many a time, that many of the acts that has been enacted during this regime, sir, are transgressing into the powers of the state governments. It is taking away the powers of the state governments. All are heaped with the union government. So this is what the Supreme Court has also said, unbridled power with no checks and balances.
Same thing, Dr. Ambedkar has also told, constitutional morality. This disregards constitutional morality. Sir, I earnestly appeal to my fellow colleagues of some political parties who may support the government's decision. My earnest appeal, as Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. It is not only to help him, sir, but to safeguard his own, sir. If it is not put out, that fire will slowly come and at last it will affect them. So it has to be thought over. Sir, all these years, we have preserved our independence. We have preserved our democracy. Sir, often you used to say, sir, very proudly, India, the largest democracy in the world. Yes, sir. The largest democracy now is in peril. Why so many charges against the state governments? No state government is able to function on its own. It's not able to enact a law. If something is passed in an assembly, it is not endorsed by the governor. So they are not able to serve the people's needs. Only they know what the people need. That's why the state governments have been formed. But now that either the union government encourages or through the governor, it is trying to obstruct. Sir, all these things have to be kept in mind. Again, I say, all the reservations and contentions we have raised are not with a partisan mood, sir, but it has to be justified. Why all these things have been done? Why all the powers have been taken from a state government? Why the chief ministership has been reduced to the level of, sorry to say the word, rubber stamp, and more or less, everything is redundant, sir. What is the big idea? Getting along. Sir, let me conclude, sir. I've already told them once, now that, not in any other manner. In the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And, sir, we will restore Delhi its autonomy. Thank you very much. Let me go. Don't be too quick. It is not too quick for me. Shri Raghav Chadda, 14 minutes. 1-4. सर, आज मैं सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा जिसे रणधारी सिंह दिनकर ने महत्वपूर्ण कवि लिखकर बताया, जिस भगवान कृष्ण एक शांति बंधु जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश पर छाता है पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला, राजनीतिक धोखा।
ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। 40 लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए। 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण का दर्जा मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सर, देखिए
सर दूसरा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा बिंदु, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज्ड द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम ये सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया, मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से प्रिंसिपल सारे देश ध्वस्त कर। आखिरी बिंदु ट्रिपल को तार कर, ट्रिपल होती है, अफसरशाही जवाबदेही मंत्री जवाबदेही को और लेजिस्लेचर की जवाबदेही तक। जैसे अगर आप एफसी हटा देते फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि आप मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा। अगर आप दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है? उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। ये आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर ये बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। ये कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर ये बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर मैं आज अपने साथी
जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर, मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होना था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हितों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं, आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा, Thank you. 12 minutes. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJP parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJP is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the parliament's power to enact legislations and the parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. You see, Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on para 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court in the matter of civil appeal 2357 says, however, if the parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, why the parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023, sir, Supreme Court का judgment आता है in civil appeal again 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. Part 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, subsection C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय 2018 के बाद 11 मई
2023 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने उल्लेख किया। अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं। जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023। ये है चीफ जस्टिस नामा और जस्टिस मनोरा का। ऑन पेज 10 पैरा 17 ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में, और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था दिल्ली सिटी ऑर्डिनेंस है वो जो है करे ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें। दैट वाज द प्रेयर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, IA number 13050 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed। तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th, 2023। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है। क्या है? What are the contours of power of parliament to enact a law under article 239AA7, and whether the parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT। So Delhi Ordinance Bill specifically is not being placed before the Constitution bench। The points of law, जो दो points of law है, वो place किया गया है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। Then I come to Constitution of India, संविधान पे आता हूँ। 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला। अब मैं संविधान पे आता हूँ। संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर? Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof। तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो powers of the Parliament cannot be derogated, cannot be declined, cannot be diluted, cannot be taken away from the perspective of the powers to undertake their activity on any matter of a union territory। संविधान कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहेगा? That's a secondary issue। Now we come to 239AA, 7A and 7B of the Constitution। मैं आखिरी पड़ाव पे हूं। अब कहा जाता है कि whether the Parliament has the legislative competence। बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल that the Parliament has the legislative competence to undertake such an activity उसके साथ है। So what does the Constitution say? 239AA article clause 7A and 7B। What does 7A say, sir? 7A कहता है Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters therein to or consequential thereto। इसका मतलब क्या है? सारांश बता देता हूं कि पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स अपने लॉज कर सकता है। 7B, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution। तो जो बात आती है बार बार constitution amendment की, clause 7B बहुत clearly संविधान का बताता है that this is not any changes in 239AA, 7A and 7B के तहत is not considered as a constitution amendment, it can be undertaken। माननीय अब मैं और 2-3 मिनट लूंगा, मैं खत्म करूंगा। So sir, this is a constitutional issue, this is a legislative issue, this is not a political one। This is an issue which is before the power of the Parliament to legislate and its legislative competence। It's not about parties or governments। सर किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए। So with these words, and the matter is pending before the court, we would leave it at that। Let the constitution bench come back to it।
but that does not take away the legislative competence of the parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the Parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you. Jai Hind, Vande Utkarsh. Thank you. Manya V. Vijay Sai Reddy. Reddy ji, you have 12 minutes. Please let him speak, please. Thank you. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir. No comments while sitting on chair. Sir, I, on behalf of my party and my Chief Minister, Y.S. Jagannath Reddy Garu, raised to support this bill. And I need to respond in this regard while putting forth my arguments, observations. I will have to respond Manu Singhvi ji and also Raghav Chadha ji, who is not seen here. No. Please, no. Sir, the crux of the entire bill has to be understood in the light of the provisions of Article 239 AA, as my colleague has pointed out, sir. Sir, 239 AA Clause 3 has got 3 subclauses. Subclause A, Subclause B, Subclause C. Sir, Subclause A states, Delhi legislature has got the power to make the laws. Insofar as the issues are concerned, except public order, law, and police. Sir, Subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of our Delhi, any matter. Sir, the subclause C states that in the event of clash between the Delhi government and the Parliament, the law made by the Parliament shall prevail, and the law made by the Delhi government will become null and void. Sir. This is the Constitution clearly provides Parliament an upper hand when it comes to the making laws for Delhi. Therefore, the argument put forth by AAP and also the learned senior advocate Manu Singhvi ji observations are not will not stand before the law, sir. Then coming to the Supreme Court judgment, the second issue which I am dealing with, sir. Sir, on the issue, please. On the issue whether the Parliament can make the law on services in Delhi, that is the issue. The Supreme Court has categorically stated, quote, in verbatim, the power of Parliament to enact the law, granting government executive power over services, is not in contention. It is now a settled position of law. So therefore, Supreme Court has not stated anything against the government or said any Parliament is not barred. Parliament is barred in making the rules in respect of services, sir. The second point, sir, hence on the issue whether Parliament can make the law to limit the executive power of Delhi government over services. In this regard, the Supreme Court has said, quote, sir, the executive power of Delhi government shall be subject to and limited to the executive power conferred upon by the central government, by the Constitution or law made by the Parliament, sir. So Supreme Court is very clear and very categorical, sir. The cumulative reading of these two observations of the Apex Court supports this bill. Therefore, YSR Congress Party supports this bill, sir. Sir, even the Supreme Court has noted in verbatim, sir, quote, the purpose of the Article 239 AA is to confer expanded legislative competence upon the Parliament when it comes to the Delhi, since it is a capital of the country and therefore must be dealt with different considerations. This is what the Supreme Court judgment is, sir. Therefore, the arguments that have been put forth by Honorable Senior Advocate does not stand for judicial scrutiny, sir. Sir, I'll have to oppose the I'll have to counter Chaddaji, Raghav Chaddaji, sir. There has been a lot of controversy.
lot of controversy surrounding the bill, sir. This controversy has been created only by Congress party, AAP and other supporting parties, that is INDA. And it is an attempt to mislead the public for their own selfish political gain, sir. Sir, Deputy Chairman, sir, please listen to me, sir. In fact, the very member of this August House, my friend Raghav Chadda ji has pointed out, sir, he has said, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहाँ हमारा अकेला मकान तोड़े ही हैं. That is what he has said. Sir, I am responding to Raghav Chadda ji. He has also said that certain non-NDA parties are under compulsion and coercion to support this bill. That is what he has stated. Please stop it. ED may come to you also. Don't. Please. Sir, Please, no. Sir, I would like to. No cross talk, please. I would like to remind Raghav Chadda ji that the fire doesn't start just like that, sir. Fire doesn't start without fuel. It is Aam Aadmi Party which has put the fuel. That is the reason why whole confusion and the entire state of affairs which are prevailing now, sir. I would only advise the honorable member Raghav Chadda ji not to play with the fire, what he has referred to. Not to play with the fire, because the very fire which he has put forth may engulf, he himself may get engulfed in that, sir. Sir, it is clear, it is very clear that if this bill is passed, the Aam Aadmi Party, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party, AAP. And to put it in Hindi, sir. Sir, no, I will not yield to you. No, sir. Nothing is Sir, recording will be just. Let them get an opportunity. Whenever they get an opportunity, they can speak. Please take it. I will not yield, sir. He's not here. I am not yielding, sir. Please continue. I will put one step forward and say, Tana Shahi Party. That is what they are doing now. Tana Shahi Party, Anarchy Party. What they are doing is that nothing but an anarchy, sir. Please take It is your no longer Delhi for selfish and ulterior motives. Please. Sir, I have to bring to your kind notice. One of the observations made by one of their founder members, sir. Sir, one of the founder members of Aam Aadmi Party, famous personality, has categorically said, he was poet and he was very popular leader also, Kumar Vishwas. What did he say? What did he say? Sir, he has made an allegation that the convener of the party, that is Aam Aadmi Party, has supported separatists and collected funds from the separatists for the elections. That is what the state of affairs is. Sir, it is not me who is saying this. It is the founder member of their party. It is the founder member of their party who has said it. Please, you know, money, please. Raghav Chadda ji, there are some more issues. माननीय वी विजय साई रेड्डी जी, आप जानते हैं माननीय चेयरमैन ने कहा जो भी बातें आप कहते हैं उसको सब्सिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे। जो आप कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्लीज Raghav Chadda has commented on YSRCP. That is the reason why I am responding to him, sir. आपस में कमेंट न करें, स्पीक ऑन द बिल, प्लीज address no comment. We won't collect the funds from the separatists. Please. We have not collected the funds from separatists. आपस में कमेंट नहीं, please address the chair. Sir, I will respond to him appropriately, sir. Please. Sir, I would like to know why they need power. Why they need power? Please. Is it to support the separatists? Is it to support the anti-nationals? They require power.
Please listen. Please listen. Please, Raghav Chatterjee, back to your seat. Back to your seat. देशद्रोह करने के लिए क्या? देशद्रोह I'm asking you. Vijay Sai Reddy ji, Sir, many members like me would like to know what happened to the founder members of Aam Aadmi Party, like Shanti Bhushan, Prashanti Bhushan, Yogendra Yadav, Kumar Vishwas, Ashutosh. What happened to them? It is their opportunistic politics, and because of that they have backstabbed them, and then they have unseated them, and these people have captured the power, and it is and I have no hesitation to say they don't fit to rule the Delhi government, sir. And finally, I would like to say one thing, sir, that Delhi is not belonging to Aam Aadmi Party. Delhi belongs to every citizen of this country. Every citizen of this country. Delhi, we have every right. And if something happens to Delhi, please go back to your seat. Please, दूसरे की सीट पर न बैठे. Please go back to your seat. Please. Address. Mani B. Vijay Sai Reddy ji, address to the chair. yes, please. Sir. Sir. Or no cross talking. Okay, sir. Please. We are. Sir, I am here to debate whether the bill is constitutionally valid, not the politics of Aam Aadmi Party, sir. Right. And the Supreme, and whether the Constitution as well as the Supreme Court both have said that this bill is constitutionally valid and perfectly within the precincts of the law. Therefore, we support this bill, sir. I have not said anything against Aam Aadmi Party. I am just bringing it to the notice of this August House what their founder members have said. And I reiterate once again that absolutely anarchic party. Mr. Pathak, Absolutely anarchic party. Mr. Sandeep Pathak, Can't act like this. Thank you very much. Thank you. Thank you. डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल. माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ. महोदय, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो कोई भी परिस्थिति हो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र. एक वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी कभी मजबूरी में असत्य बोलते हैं, नरवा हस्ती, धर्मराज युधिष्ठिर. एक सामान्य नागरिक होते हैं जो मजबूरी में सत्य भी बोलते हैं, कभी कभी असत्य भी बोलते हैं. 2013 के बाद इस देश के राजनीतिक परिवेश में एक नया प्राणी उदय हुआ है, जो गीता पर शपथ लेकर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं, झूठा ही बोलूंगा और झूठा ही बोलता रहूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा. अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब यह पार्टी सरकार में आई थी तो दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े समर्पण भाव से इसका समर्थन किया था. दिल्ली के व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की. बैठक में दिल्ली के व्यापारियों को कुछ सपने दिखाए. क्या थे वो सपने? हम रेडी टू यूज एंड शिफ्ट मार्केट बनाएंगे. 2014 एक भी मार्केट नहीं बना. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सारे बाजारों को मॉडल बाजार बना देंगे. एक भी बाजार मॉडल नहीं बना. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजारों को, चूंकि लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है, हम रिलोकेट करेंगे. एक भी बाजार रिलोकेट नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बिजली का बिल कम करेंगे. सच्चाई यह है कि कमर्शियल का बिल दिल्ली में सारे अधिभार को छोड़ करके सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक है. 9 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक का बिल देना पड़ता है. इन्होंने कहा हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कराएंगे. 9 साल के इतिहास में अगर नितिन गडकरी न होते
तो इन्होंने एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बनवाया है। इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा 10 मिनट की बारिश में आपके यहाँ पानी लगता है, हम इसका इलाज कर देंगे। आज की स्थिति यह है कि 10 मिनट तो दूर, 2 मिनट भी पानी बरस जाए तो पुरानी दिल्ली पानी में डूब जाती है। इन्होंने कहा कि हम आपके हाउस टैक्स को, चुप रहो, इन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को कम करेंगे। सच्चाई क्या किया इन्होंने? कमर्शियल टैक्स को 3 गुना किया। और उप सभापति महोदय, यह अकेला राज्य है जहां व्यापारी कमर्शियल टैक्स भी देता है और अपने दुकान के सामने का कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का शुल्क भी अदा करता है। इन्होंने वादा किया था कि हम झोपड़ी झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के देंगे। सच क्या है? भारत सरकार ने करोल बाग में 8000 मकान बनाए और शिफ्ट किया। जब इनको मालूम हो गया कि झोपड़ी झुग्गे वाले इस पक्के मकानों में चले जाएंगे तो हम इनका शोषण करके इनका वोट नहीं ले पाएंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झोपड़ी झुग्गी के पक्के मकानों बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के 351 सड़कों को रेजिडेंशियल की जगह पर कमर्शियल परमिशन देंगे। सच यह है कि आज 9 साल हो गया, एक भी सड़क को इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदलने का काम नहीं किया। जब अभी चुनाव हो रहा था एमसीडी का, एक मुख्यमंत्री गाजीपुर के पहाड़ पर जाता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है दिल्ली कूड़े से डूबी हुई है, एमसीडी हमको दे दो, हम दिल्ली से कूड़ा खत्म कर देंगे। और सच्चाई क्या है? बजट में व्यवस्था करने के बाद कितनी क्रूर है यह दिल्ली सरकार। इसने अपने ही एमसीडी के लोगों से कहा हमने बजट में व्यवस्था की होगी, लेकिन जो व्यवस्था 850 रुपए करोड़ की कूड़े को हटाने के लिए की है वो हम तुमको नहीं देंगे। अपने ही सरकार को इन्होंने पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में व्यापारिक विस्तार करने के लिए हम झोपड़ी और हम ट्रेड फेयर लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के व्यापारी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर लगाने का काम ये लोग कर सकें। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया तो किया क्या? मैं बैठा था कोकू की बैठक में, अमर पटनायक जी हमारे मेंबर थे। उन्होंने कहा जल्दी जाइए, दिल्ली डूब रही है, पानी लग गया। मैं उठ करके भागा, मैं वेस्टर्न कोर्ट में रहता हूं, वहां पहुंचा। वेस्टर्न कोर्ट में पीने के लिए पानी नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला वजीरपुर सेंटर डूब गया, इसलिए पूरे दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी। पहली बार अध्यक्ष महोदय 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में कोई भी बाढ़ नहीं आई थी। इस साल सिर्फ 3,59,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। इसलिए डूब गई कि इन्होंने काम भी नहीं किया। 2 साल तक सिंचाई विभाग की बोर्ड की इन्होंने बैठक नहीं की। बैठक की डेट तय की, दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने आने का वादा किया, मुख्यमंत्री गायब हो गया। दूसरी महिला मंत्री पहुंची, वो भी गायब हो गई। आज तक इन्होंने दिल्ली को यमुना के बाढ़ से रोकने के लिए 9 साल की सरकार हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने किया क्या? परिवहन बस घोटाला किया। इन्होंने किया क्या? उपराज्यपाल ने अभी 437 लोगों को निकाला है। कोई सलाहकार था, कोई रिसर्च फेलो था, कोई विशेषज्ञ था, कोई रिसर्च एसोसिएट था, कोई कंसल्टेंट था। और वास्तव में क्या था? कोई किसी विधायक का आसपास का था, उसका भाई था, कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार था, कोई आप पार्टी का कहीं का कन्वेनर था। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आरक्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए बिना प्रॉपर तरीके से 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उप सभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे
तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। एक एक चौराहे पे 4-4 आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं? शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने? विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर। एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका हैव मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लैबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लैबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा? आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड। यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें, यानी उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है। मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे तो अभी तो जुमा 1 महीना उनको आए हुआ है। वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहां बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो। थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया पट्टाभी सीतारमैया कमेटी का। नेहरू जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जाकर कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो? 2 साल में दुनिया बदल गई। दिल्ली की आधी से 3/4 संपत्ति भारत सरकार की होती है। हम दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा कैसे दे सकते हैं? ये नेहरू जी की बात कह रहा हूं। अगर किसी सदस्य के अंदर हैसियत होगा तो मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात इन्होंने कहा। अंबेडकर ने कहा, so far as Delhi is concerned, it is better to us that as a capital of India, it can hardly be placed under the local administration. अर्थात जहां तक राजधानी का सवाल है, दिल्ली को स्थानीय प्रशासन के हाथ में कतई नहीं दिया जा सकता। यूएस कांग्रेस का पूरा नियंत्रण यूएस की राजधानी वाशिंगटन पर होता है। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा नियंत्रण कैनबेरा के ऊपर होता है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देश की राजधानी में कोई शहर हो, उसे सीधे सीधे देश की राजधानी के नियंत्रण में रखा जाए। और अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? 1952 में सरकार बनी थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह जी आए थे। कितने दिन वो रह पाए? नेहरू जी जानते थे जो हो गया है बहुत गलत हो गया है। उन्होंने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई फजल अली की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया। बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट सिंधवी जी पढ़ रहे थे। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं भी पढ़ देता हूं, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मीटिंग में इस कमेटी ने दिल्ली के बारे में कहा। इन फ्रांस फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर पेरिस than over other municipalities. In England, the police administration of the metropolitan area are directly under the control of Home Secretary, who does not exercise similar power in respect of other municipal apart area.
Apart from the reasons which are peculiar to each country or city, there are some general considerations necessitating special arrangement in respect of national capital. Capital cities possess or come to possess some degree of political and social predominance. They are seat of national government. Any constitutional division of the power, if it is applicable to the unit functioning in the seats of national government, it is bound to give rise to embarrassing situation. और 1956 की इस रिपोर्ट को आने के बाद हम आभारी होंगे इस देश के प्रधानमंत्री का, चाहे जो भी नाम, उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हटा दिया, दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया और दिल्ली को पुनः यूनियन टेरिटरी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही थी 1991 के विधेयक की। क्या है यह विधेयक? मेरे हाथ में वो कागज है। जिन बातों की चर्चा माननीय विजय साई रेड्डी जी ने की, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। धारा 3 सब क्लास 3 के एबीसी को मैं तीसरे पर आता हूं, जिसकी चर्चा सिंघवी साहब ने की थी, यहां नहीं। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग the provision contained in the foregoing clauses and for all matter incidental or consequential thereof. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में ये जो विधेयक आया है वह दिल्ली के निवर्तमान विधेयक को सप्लीमेंट करने के लिए आया है। क्या प्राविधान है? 9 साल ये सरकार रहे, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 होती है, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 में लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हें मालूम था कि इनके सरकार में आने से लेकर 9 सालों तक दिल्ली में कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी काम करते हैं। अगर ये प्रशासन चलाना सचमुच चाहते, साई रेड्डी साहब ने सही कहा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, अगर ये सचमुच चलाना चाहते सभापति महोदय, तो इन्होंने 2014 में ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया होता और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली होती। सच क्या है महोदय? यह कानून स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करता है, आर्टिकल 41 को जमीनी धरातल पर लागू करता है और लिखता है दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र में समूह ख अराजपत्रित और समूह ग पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक दिल्ली सरकार को इंपावर करने वाला विधेयक है। मैं अब अपनी बातें खत्म करूंगा। आपने विपक्ष के नेता को सुना है, बड़े दिन बाद बहस हो रही है और अच्छी बहस हो रही है। थोड़ा देर हमको भी जैसे उन्हें बोलने दिया, मुझको भी बोलने ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये लोग कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या है कोर्ट का निर्णय? पढ़ा है किसी ने? कोर्ट के निर्णय के 2 हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक हिस्सा कहता है, ये लिखित निर्णय है मेरे पास, ये पूरी किताब है कोर्ट के निर्णय की, मैं शब्दों को साहित्य के आधार पर बोल रहा हूं। कोर्ट का निर्णय कहता है, द पार्लियामेंट हैज legislative competence over all the matters in the list 2 and the list 3 in relation to the NCTG, including the entries which have been kept out of the legislative domain. बस मैं समाप्त कर रहा हूं। और अंतिम बात क्या कहा कोर्ट ने? ये लोग ले दही दे दही वाले हैं। कैसे? अंतिम लाइन सबसे, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं, आपसे अधिक कौन जानता है हुजूर? उन्होंने कहा, We have answered the issue referred to the Constitution bench. हमको एक इशू रेफर किया गया है, हमने उसका जवाब दे दिया। By the order dated 6 मई 2022, 6 मई 2022 को हमें एक इशू रेफर किया गया था, हमने उसका जवाब दे दिया। The registry shall place the paper of this appeal before the regular bench for disposal. यानी डिस्पोजल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को आप जानते हैं सभापति महोदय, इसे रेगुलर बेंच में जाना था और वहां का निर्णय आना था। लेकिन यह रात में अधिकारियों के घर में घुसना, उनके यहाँ लाठी पोठी चलाना, अधिकारियों को मारना,
सतर्कता विभाग के कागज निकालना। मैं खाली एक चीज जानना चाहता हूं, उन कागजों में था क्या जिसको ये निकाल के लाना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं इन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, खुल चुकी है इनकी कलियत, जान चुके हैं दिल्ली के लोग। और आने दीजिए लोकसभा का चुनाव। ये दो मिल गए हैं जो आपस में ना, ये हमको समझाना चाहते हैं आत्मा की आवाज। ये हम भाजपा के लोग हैं, सिद्धांत से जीते हैं, आपकी तरह अवसरवादी नहीं है कि कल एक दूसरे को गाली देते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। नेहरू जी जब सुनते होंगे कि ये हमारे परनाती महोदय हमारी पार्टी को डुबा करके ही मानेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। डॉक्टर के केशव राव। नो सर, डॉक्टर के केशव राव। डॉक्टर के केशव राव। डॉक्टर के केशव राव, प्लीज। Thank you, sir. I stand disadvantaged. Coming in the serial of some 8 or 9, whatever I had to talk has already been taken over by Mr. Sanghvi and also Sukhendu. So I don't want to repeat what exactly the Supreme Court has said, what the Supreme Court judgment has said, and how to analyze it, and to tell you that what you have done, we are not at crossroads, we are at crossroads. Please, you understand, I'm taking this serious. I'm taking it in new crank, sir, because I don't want to repeat whatever has been said by Sukhendu and also Mr. Singhvi. What they said is right. It is a fraud trade on the Constitution, this ordinance, and it is absolutely with a mollified intention they have done. I understand your concern also, sir, because Sukhendu was talking that you had a sardonic smile on your face. It's only because I know this House has all the right to take any legislation it wants. That is your stand, has been the day you took over as the Vice Chairman. But at the same time, its limitations also have to be understood. So that is why I will not take a stand on that. But I will only tell my friend here that we are not discussing the CBI, or we are not talking about any criminal law here. We are talking about a constitutional law which is coming to replace the ordinance, which again is a statutory thing. When we oppose it, it is called statutory resolution. We don't oppose it because we are opposing in a debate. We oppose the bill here in the ordinance bill as statutory. I don't know why Congress was so much worried when our Sai Reddy was speaking. Everybody has these compulsions, and Sai Reddy's compulsions you will never understand. So please understand the compulsions of each one. As you said, everybody, the compulsions include many things. I don't want to go into them. So politically we take a stand. But anyhow, sir, we have... I am always with Constitution, sir, with this party or that party. I have resigned as a CWC member. I have resigned as Congress. Sir, Lok Sabha has discussed this in detail. And the debate yesterday was very informative and erudite. Because I am not trying to take what Mr. Singhvi or Sukhendu have said, I would like to take the entire debate with a different tag, which you will appreciate, sir. But before doing that, let me also quote what the Home Minister has said in the Lok Sabha yesterday. He was surprised how all of them came together when they were not together at all. He was worried about this grouping. Let me tell you, I am not part of India. I am Udar Boro. I am not part of INDIA. But at the same time, when our nation is settled, when there is a threat on the border, all of us join together to face the enemy. Like that, today I have an enemy in somebody who is trying to subvert Constitution. This subversion, I am against that. I stand against you because it is the Constitution that matters, not your politics. Unfortunately, the speeches that are being made, the debate that was involving itself into, was all about politics. One blaming the other. That is not the question. Today, right before you is something. And I would say, yesterday, while the debate was very good in the Lok Sabha, a suggestion, not a suggestion, a remark came from the one party, a recognized known legal brain,
Mr. Pinaki Mishra, who said all, he gave us, he stood a very stout defense for you. He defended the ordinance, but at the same time he said, when it comes to the basic issue of the ordinance, when it comes to services, and when the Supreme Court sees of it, I don't think we should rush through it, and we should wait for another few days. This is what exactly a constitution should do. Sir, I'm trying to tell you what my view is. Or Patra also agrees that it is not keeping the equidistance. It is appreciating the constitutional point. Yes. What Pinaki was saying yesterday was, Pinaki Mishra was saying yesterday was, we are not sure of what is happening, and the Supreme Court is absolutely against the particular bill, and hence let us wait before I possible. Sir, anyhow, sir, as I said, we all join together. The entire opposition is one when something serious of this nature happens. Sir, yesterday, the Home Minister is the Lok Sabha, please. He was building a narrative. Not only he is articulate minister, one of the ministers of state, was building a narrative against the Kejriwal. It was not against AAP. They were taking the Kejriwal's names, Shahenshah, some Sheesh Mahal, or this, somebody, even here also. But if somebody is really corrupt, if you are building a narrative for corruption of a state, you have a right. You are Home Minister of that country. Instead of that, why are you meddling with the Constitution of India? You do that now. That is what we are waiting. That is what the members here said. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Take it, sir. Through me. Yes, Dr. So, I will reflect everything the other side. Yeah. So I am a good reflector. So I don't know why Kejriwal should shake the BJP or the parliament so much. I never knew that he was that powerful man, that his corruption has made you pass constitutional amendment bills. Now, sir, one other point, because I'm not getting into the integrities of the essay judgment, but one thing I tell you, what really surprises me, and it should have surprised you also, when a unanimous decision of 5 judges going along with the CJI sign a thing before the ink could dry, you have the pen of the president giving an ordinance. That too, it comes on the last day of the Supreme Court's working days. This really gives some kind of suspicion. And as a lawmakers, we get surprised over that kind of gestures. What we expect is, this is a house which discusses the law. If it is not good, we throw it out. If it is good, we opt it. Now, sir, as I've already said, it's a fraud, I will not say. Sir, why it is a fraud is, moreover, I will not again repeat, sir, more than 3 times the Supreme Court judgment said the representative character of a government is what is democracy is all about. And that cannot be replayed. Sir, now, this representative form of government is a triple chain of command, which he said. Again, I will not go into that because much has been said about it now. Sir, I want to take the entire flag on a different, I want to take a debate on the different flag. Now, the Home Minister is smiling because I think I have no point. I think I have more point than Singhvi has. But I don't want to waste the time of speaking. I have the problem. So, sir, I don't want to recollect or remind you of the Americans and the Supreme Court judgment. But when you read them together, in conjecture, you would understand what is exactly the constitutional morality is. I'll not able. So without constitutional morality, dharma can never be established. Constitution is of dharma. So without morality, that cannot be established. So where are we leading to by giving all these kind of things? Because that I also have to. Wait, my papers. Sir,
Mr. Smita, you said this is not about Delhi at all. What was referred to the Supreme Court is about the cantors of NCTD and also about 239 AAA. What is cantors? It is about functioning. Cantors of 239 NA is nothing but functioning. On that, the Supreme Court very clearly said, the further ordinance hands over the government Delhi to bureaucrats, and the ordinance hands over the governance of Delhi to bureaucrats. This is what is happening. That takes me to my subject today, sir. Sir, I'm afraid we are opening a new era. It is a serious matter for the Home Minister to think, and also the minister, however their quote is. We are entering a new era of what is known as bureaucracy. I am not against bureaucrats. There is a subtle difference between a bureaucrat and a bureaucracy. Bureaucracy is when you make this single-minded thinking into a theory and a policy, it becomes bureaucracy. When you shun your accountability, it becomes bureaucracy. Now we are, by handing over every power to a bureaucrat, and like the chief minister, elected chief minister, elected government, then it becomes bureaucracy. Sir. I want Yadav to appreciate this point, because I'm afraid of this, because this has been discussed time and again in many of the books. Like, sir, even short Mill said, that man will be accepted if not anybody else. Mill referred to the bureaucracy as a distinct from government, separate from the representative democracy. So when you are thinking of representative government, which the verdict has stressed too many times, Karl Marx theorized about the role and function of bureaucracy in a critique of Hegel's philosophy. He said, you can depend on anything, but not on bureaucracy. Sir, I am afraid of one thing. Please understand. The students of history should understand. I am telling you, we have best of bureaucrats as people's representatives here. They are accountable to people. Those who are not accountable are called bureaucrats. In my reference here, those who are coming into this house, like we had one of the best bureaucrats, Mr. Manmohan Singh Ji, who ruled this country. So I am not against bureaucrats, but this mindset that we should go to an agency which is not accountable to people and overrule who is accountable to people is what exactly is. Thank you, sir. Sir, I lost. Sir, I am putting, but I will not take the names, but I have Mill and Wilson, Udo Wilson, and one answer to this problem is to say that bureaucracy has no place in all real democracy. Sir, time is over. So, yes, sir, you would appreciate, I would give a last sentence. Politics is an art of absurdities. You find them alarming. I am out of it. But you wrongly diagnose it and give a wrong remedy. That is what exactly is the thing. Let us think. This is, again, Groucho Marx, great American writer. So with this, I'll tell you, let us not, in our temptation, open the gates for a new agency to take over the representative character of this country, because we have come long way from monarchy to autocracy to aristocracy to democracy and republic. And now the new word used by Supreme Court is representative government. So this is what I was telling you. So my answer is this is, we are crossroads because we are trying to bury democracy, representative character. We are disregarding the representative character, and this bill has to be opposed by everybody who has some kind of a regard for democracy. Dr. Keshav, I am grateful. You have taken to paper glass, because he sought my permission to have a glass of water. I said, don't have steel, don't have glass, have only paper glass. Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General.
Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Professor Manoj Kumar Jha, 9 minutes. जी सर, वाकिफ हूं। शुक्रिया सर, बिल्कुल शुक्रिया सभापति महोदय। एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूं। हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि एक सेठ थे राजस्थान में, अचानक सांप सांप चिल्लाने लगे। तो लोग आए, बोले क्या हुआ? बोला देखो सांप अभी पेट पर से चल के चला गया। बोले काटा तो नहीं ना? बोला नहीं काटा नहीं, रास्ता देख गया है। So when I rise Professor, today, this is my quote. Everyone in the house knows. Not of your use. sir, ये तो मैंने कहा है. sir, I would want all of you to give me uninterrupted time. I'll not speak anything which is going to prick you or disturb your rhythm. What I wanted to say, sir, असल में कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं। जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। मैं और मेरी सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है, उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं। संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। तो उन्होंने 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए। अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे। सर, इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बिंदु पे मैं आऊं, मेरे कुछ साथी वो जिन्होंने लोकसभा में वोट किया है, मोस्ट लाइकली दे विल डू द सेम हियर। हालांकि लोकसभा के बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, माननीय सभापति महोदय, डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो। लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। सर, बचपन से लेके आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी। ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो। लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता। सब फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस। सर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये पड़ोस के मुल्क से आया है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेश नजर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर, एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, जिसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी कोलन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of people.
सर अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ओपीएम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है शांतिवन में। सर ये मूलतः मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, ना सदन में ना सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही है कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, सर कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे, अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या। नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। ये फर्क आया है ना सर, चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर। हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक 3 चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है सर, ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या। मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है, एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते। हालांकि मैं जानता हूं इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था सर, और मैं समझता हूं कि ये बात मैं कह करके, और 239AA के बारे में जो बातें कही गई हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक चीज पे आऊंगा, कोरम। सर ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे। मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर। मुख्यमंत्री चेयरमैन है, वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। सर इट इज नॉट कोरम, it is actually an instrument to decimate the very idea of elected government. सर सर घंटी मत हो जाइए, केशव राव जी की श्रेणी में 1.5-2 मिनट और ले लूंगा। सर एक सोल डिस्क्रिशन का मामला आया है, सोल डिस्क्रिशन, और ये मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी जो संदर्भ आते हैं ना, टू एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द मिनिस्ट्री, सर उनका भी सोल डिस्क्रिशन नहीं होता है। ये तो एक तरह से मुझे सोललेस डिस्क्रिशन दिख रहा है, आत्मा विहीन डिस्क्रिशन। सर ये उसमें नहीं फिट बैठता है। सर एक और चीज, मैं अभी कल गूगल कर रहा था सर, फेडरलिज्म पर 2 बहुत महत्वपूर्ण कोट मिले इंटरेस्टिंग लोगों के, एक चंद्रबाबू नायडू जी का, एक नवीन पटनायक जी का। वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बस मैं बता देना चाहता हूं। आखिरी सर, ये पेश नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं, अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे, तो दुष्यंत जी कह के गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो।
सर ये आसान मामला नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद। Karim, Bigash is speaking, sir. Bigash, I was given the name. Bigash Bhattacharya. He is speaking for CPIM. CPI, for CPIM, Bigash Bhattacharya is speaking. I have given the name. Vikas Bhattacharya. Vikas ji, Chairman sir, 7 minutes. I will finish before that. Yes. The 7 minutes starts from here. Sir, They end here. we are all rational animal. Human is rational animal. The difference is rationality and animality. This rationality has driven us to move forward. The human civilization has advanced step by step. We have never seen that the civilization has gone backwards. When the Constituent Assembly was discussing about the Constitution, you are well aware the role of governors were discussed. It was decided upon discussion the governor cannot be another source of power. Governors should act following the advice of the elected representatives and the representative of the government. This is a settled principle. And on the basis we have advanced to a people's government where the governor was an ornamental constitutional head to keep liaison with the center. The basic principle was that the federal principle and federal governance as per our constitution is carried forward. When the constitution was adopted, then Delhi was not a state. That was the union territory. Like many others, I am not going to give examples. That rationality has driven us to go forward and advance to the stage that the Delhi would be a state with certain restrictions. And the people will have the right of governance through their representative. This was the advancement of the Constitution. That's why the Constitution Amendment and 239 AA was incorporated. Now what we see, we find today that we are going backwards. The governor or the bureaucrats, they are bound by the constitutional principle and constitutional morality to be answerable to the elected representative. That is the republic. That's the republic, democratic republic, the constitution makes us thought of. No question of this party and that party. That was the result of independent struggle. I know some people did not have the legacy of independent struggle. They might have a different outlook, different thought. But this representative government is the outcome of independent struggle which the people fought, giving their lives, sacrificing lives, not surrendering their own right at the behest of the British mercy. Now this, and what this rule is, what this bill for? Bill is sought to replace the ordinance. Why the ordinance came for? Let us analyze stage by stage. I am not going to have a quarrel with this party or that party. The House is for discussion of the constitutionality of this bill. Nobody questions the power of Parliament. Having power is one thing, but exercise of power is wisdom. Unless you have the wisdom, the power gives you absolutely autocratic authority, which is against the basic principle of our constitution. Sir, have you noticed you were the governor and you felt that in spite of the best of your desire, you have to be bounded by the aid and advice of the government. That was your practically frustration, that without the aid and advice of the government, I cannot do anything. Because the constitution thought of, again I repeat, the representation of the people. People is the last word. They have chosen, might be XYZ you are liking or not liking. In the Delhi bill, have you seen? I have never seen. The Constitution of India, the Supreme Court had said, even the President of India doesn't have unguided discretion. And here, by a law, Parliament will say, you have a sole discretion. Would the Parliament invite the autocracy? This Indian Parliament, this law invites autocracy. This law speaks of throw away the people's government. I appoint a bureaucrat. I appoint somebody of my choice. He will dictate. You will be subservient to this. Have you gone through this bill?
this bill would take us to completely the stage of animality, not the stage of advanced humanity for which we feel proud of. We, the people of India, we thought of governance. I was reading this bill. It reminded me the 1926 Act of Kolkata Corporation, where the executive was the superior. Mayor was just a subservient force. That was thrown away by the people. Now, here also, we have, under the constitution, created third tier of government. Democracy means distribution of power. Democracy means not centralization of power. These bills are only empowers a particular individual. He might be a wise man, but maximum power without any guidance would lead him to an autocrat, not less than the Hitlerite autocracy, which will take us to a doom. I have already submitted. Here, everybody has said, the chief minister is nothing but a puppet. Puppet of whom? The bureaucrats. Bureaucrats will dictate and chief ministers to follow. Is this the way you respect the constitutional principle and morality? Here the bill says, and in fact, this bill is total amber, reading through the clauses, abdication of the governance by the people's representative. I would request all, don't be guided by your petty political feeling. This will lead to a situation. Tomorrow I will say the Orissa government, Orissa chief minister has to be subservient to the governor. I pass rule. What would you do? The home minister's praise in the meeting would not give you result. They will say there is a precedent. Parliament has passed such a law. Lord, you have already given me a caution. I said I will finish within the time. I finish with the appeal to everybody, even to the Treasury bench. Don't be trapped with such a bill which ultimately will kill you. Don't make the democracy absolutely a farce. Let the representative government survive and the principle be extolled by the constitutional principles. With this, I appeal to you, reject this bill. I appeal to you to all, reject this bill. Thank you. Very good. Shri Anil Prasad Hegde, 7 minutes. 1 second. Like to say, there are a couple of references that have been made to Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. He is not a member of the House. So any remarks thereof may be kindly examined and discussed. One, sir. Sir, I'm not done. The second is a reference. The second, sir, I'm not yielding. I'm not yielding, sir. The second is with reference to the Odisha government, sir, as well. We are open to discussions on that. We can talk about 239 AA and why it only serves the Delhi government, because Delhi has a special place, is sui generis, which has been provided by Supreme Court. Therefore, to talk about any other government is not appropriate. The same may kindly be examined, sir. I will examine and Sir, take a call. thank you. Shri Anil Prasad Hegde, 7 minutes. Thank you, Chairman. 7 minutes. 7 minutes. Thank you, Chairman. I am rising on behalf of my party. When there was a time for you to say so, Mr. Siva, you did not say so. And now you are saying so. I pleaded with everyone to say so. Mr. Hegde, 7 minutes. I'll take care of it. Thank you, Chairman. I am rising on behalf of my party to strongly oppose this bill. At the outset, I want to make it clear that this bill, which seeks to ratify an ordinance, has dealt a severe blow to democracy and cooperative federalism. Sir, the union government is usurping the powers of the state by blatantly bulldozing through laws on subjects in state list. The government is also bartering the sovereignty of this country, sir. यह विधेयक दिल्ली का मुख्यमंत्री और 2 अधिकारियों को मिलाकर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का स्थापना करेगा, जिसमें सिर्फ 2 लोगों का कोरम से इस अथॉरिटी का मीटिंग संभव है।
इसका मतलब दिल्ली का चुनी हुई सरकार को काम करने, निर्णय लेने के लिए दिल्ली के लोगों ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार को दो अधिकारी लोग एलजी का सहमति से छीन लेंगे। सर, ये कैसे अनडेमोक्रेटिक है? सर, पिछले सप्ताह इसी सत्र में बायोडायवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट संशोधन बिल पास हुआ। ये बायोपायरेसी को बढ़ावा देगा। बायोडायवर्सिटी एक्ट में जेपीसी द्वारा किया गया 21 रिकमेंडेशंस में से 20 को दरकिनार करके पास किया गया है। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट is opening up precious forest resources to the exploitation of private companies. To illustrate my point on sovereignty, sir, पर्यावरण कानून उल्लंघन के लिए जो जुर्माना होता था, इसको समाप्त करने के लिए एक लंबे अरसे से अमेरिका को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मांग था। बिल पर बोल रहा हूं, जिसके बारे में मेरे पास प्रमाण है। पिछले सप्ताह यहाँ पर बायोडायवर्सिटी संशोधन बिल पास करके उन लोगों को उनका मांग को पूरा किया गया। सर, ये दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूँ। जब जैसे कैसे अनडेमोक्रेटिक है मैं बोल रहा हूँ। विडंबना है यह है बिल। सर, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में लगातार सामुदायिक हिंसा चल रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संपूर्ण ब्रेकडाउन बता रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलने के बजाय दिल्ली में जहां पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में संशोधन लाना विडंबना है। ऑनरेबल मेंबर, बोलिए। मैंने बताया सर, ऑनरेबल मेंबर, स्टेट लिस्ट। One second. You are a senior person, sir, knowledgeable person, sir. You have to confine to the issue at hand. I was talking how this is undemocratic. I was saying to drive home my point, that how the bill is undemocratic. I was giving an example. Confine. मैंने बताया सर, यह बिल स्टेट लिस्ट में राज्य का अधिकार को छीना जा रहा है। सर, कृषि स्टेट लिस्ट में है। सर, उदाहरण के लिए मेरे दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के आम आदमी का सरकार जीएम मस्टर्ड और जीएम क्रॉप्स का विरोध किया है, जैव परिवर्तित फसल को। लेकिन पहली बार खाद्य क्षेत्र में जीएम फूड क्रॉप्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का DMH11 जीएम मस्टर्ड को 25 अक्टूबर 23 को केंद्र सरकार अप्रूवल दिया है। विदेशी कंपनियों को खाद्य क्षेत्र में जैव परिवर्तित फसलों को लाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रोजन हॉर्स बन के रास्ता साफ किया है। सर, Go ahead. सर, चलो आगे चलो। सर, मैं जो आपको अभी सॉवरेनिटी के बारे में मैंने बताया, उसका एक मैंने आपको पढ़ के बताता हूँ एक लाइन। सर, ये यूएस का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो वहां का बराबर है, जो मिनिस्ट्री का बराबर है, ये बताता है कि this dialogue should be preceded by an analysis to be developed by EPA of India's current and relevant statutory provisions with a discussion of these interpretations and application in civil cases as well as specific recommended changes in the constitution. देश का संविधान में को बदलने के लिए अमेरिका हमको कह रहे हैं सर, और environmental statutes, regulation that are necessary to establish civil judicial authorities. सर, मैं इस बिल को मेरे पार्टी विरोध करता है। सर,
Shri Jose K. Mani, 4 minutes. 4 minutes. Thank you, sir. I rise to oppose strongly the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As said by my colleagues, it is anti-democratic, anti-federal, and it is aimed to distract the proper functioning of the democratically elected government of Delhi. When you talk about democracy, it is centered around the other people. It is made for the people. But this bill is formulated by the bureaucrats, of the bureaucrats, and for the union government, which means the people are eliminated and the essence of democracy is vanished. Yes. The bill is nothing short of a disgraceful attempt to snatch the power from the hands of the people. The way the ordinance was sneaked in without any valid justification is nothing short of the abuse of power. What is the objective of this bill? What is the emergency of passing or creating the ordinance? It is only a politically motive gain. The bill undermining the very essence of parliamentary democracy and the right of its citizen. It undermines the state's right and authority, turning Delhi into a mere puppet under the central government control. Yes, sir. The provision of the Honorable LG's sole discretion on matters recommended by the National Capital Civil Service Authority is a cruel joke on the concept of autonomy and self-governance. The bill is another betrayal of our democracy and federal system. So the bill is a systematic death blow to the democracy, is what achieved by this legislation. The central government, with the majority which they gained by decisive strategy, is now chopping the branch they sit. So we can cite a number of cases like, to establish this the various bill which is passed in the parliament, the multi-cooperative society bill, the agriculture bill, and also the intruding upon the sovereign of domain of the state and so on. All these are trying to crush the federal system of our country. Exactly. The bill also adds to the list of actions undermining the federalism in the country. Basically, we understand that BJP is not able to get the power of the state of Delhi from the people of Delhi democratically, that is through election. Hence, they are trying to curb the powers of the state government. The only question is, if BJP was in power in Delhi, would they accept this bill? I am sure that they will never ever think of it. Let me conclude by saying this bill and the ordinance is an insult to the spirit of the nation. This legislation I will vehemently oppose until justice prevails. Thank you. Shri Abdul Wahab, 4 minutes. Shri Abdul Wahab, not present. Shri P. Chidambaram, Shri P. Chidambaram, not present. Shri Mahesh Jethmalani, Honorable Chairman, I rise to support this very, very important bill. I'm not in court and I'm surrounded by you. Can I persuade you to yield in favor of Mr. Chidambaram? Yes, of course. I was actually supposed to speak after it. No. Call has been taken by the chair. Shri P. Chidambaram, I'm just looking for the time. 9 minutes. There is a request from your party.
All right, all right. Sir, my good friend, Dr. Abhishek Singhvi, has marshaled the legal arguments and placed the facts before this House and appeal to them, appeal to the House and appeal to the Treasury benches not to proceed with this bill because this bill is unconstitutional. Now, I can understand the full-throated support given by the BJP. But what I do not understand is the half-hearted support extended by two of my learned friends representing the BJD and the YRCP. They know that this is unconstitutional. I think the law ministry knows it is unconstitutional. It's like a moth which burnt once when it approaches a fire, again approaches the same fire, and again approaches the same fire because it's a moth. Now, this government tried it once, it failed. It tried it a second time, it failed. And you're trying it a third time. I wish you what you will get, a spectacular failure when this bill is taken up. Be that as it may. I'm not getting into the legal arguments because we are not a court of law, nor, I'm sure, anyone in the chair wants to be a judge. We are the Council of States. We are duty-bound to protect the rights of states, rights of union territory. We are not representing an individual parliamentary constituency. I'm representing a state. Each one of my learned friends is representing a state. And collectively, we should represent all the states of India. What are we? Are we a union of states? Or are we going to become a union of moth-eaten states? Or a union of moth-eaten union territories? Or a union of municipalities? Please remember the old dictum, no taxation without representation. That's the fundamental premise of a representative and parliamentary democracy. Delhi has, according to the figures I sourced today, 3.17 crore people. Now, the 3.17 crore elect a government. They elect a government to govern them, to take decisions on their behalf. The underlying premise is we are a representative and parliamentary democracy. You may ask me, where are those words in the Constitution? Those words are in the Constitution. The magic words are that there shall be a council of ministers with the chief minister at its head to aid and advise the lieutenant governor. The words aid and advise is not some kind of a friendly advice. Aid and advise has a long constitutional history. Aid and advise means the real power is in the council of ministers. The LG exercises formal power. The real power is with the ministers of the government. The formal power is with the President of India. Aid and advise is magical words. What we are doing today is subverting the three magical words, aid and advice. Now,
people are watching us. It's not only the 200 odd members in this house. People of Delhi are watching us. They will watch us today on television, on YouTube. They will know that this government is attempting to take away the real power of the elected representatives and put it in the hands of bureaucrats. Now, I asked in a tweet, and I'll ask this question. What is the merit you file with the bill? Leave alone the constitutional aspects. What is the merit you file? Is there merit in a 3-member authority where 2 officers will constitute a majority and overrule the chief minister? Is there merit when 2 members of the 3 constitute a quorum? They can even call a meeting, hold a meeting without the chief minister? Is there merit that even if a decision is taken unanimously, the LG can overrule it? Is there merit that the member secretary, who is the principal secretary of Home, will convene a meeting with or without the chief minister? What is the merit? What is the merit? I heard you on television. I heard the honorable member on television. I didn't find you mention any merit in any clause of this bill. I heard you also, and I was even more disappointed. Therefore, what is the merit? What is the merit? What is the merit? What is the merit? What is the merit in this clause? What is the merit in any clause? There is which clause has any merit in it? I would urge the honorable member to get into a groove that We are does not getting into the invite. constitutionality. I'm saying, irrespective of the constitutionality, which clause has Sir, any you went on a merit in it? tangent, physically and thoughtfully. Therefore, the honorable member had an occasion to be on his feet. I would urge you to confine to that list. Very well, this is my view. It is expected of you, sir. No, I have great respect for their view. All I'm saying is, I didn't find them point out the merit in the clause of the bill, irrespective of the constitution. So we have a bill today, which the government thinks is the model for Delhi. They had invented a model for Jammu and Kashmir, and that is in court today. Please remember, we always talk about breakdown of the Constitution of India, breakdown of constitutional governance. Article 355, 356 speaks about breakdown of the constitutional machinery. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery by passing this bill. By passing this bill, we are breaking the constitutional machinery as envisaged. We broke it on 5th of August 2019 in Kashmir, divided a state into 2 union territories, and sending a chill in the spines of every state that any state can be broken into union territories. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery. Sir, Honorable member, let me end by saying, while I endorse whatever my good friend Dr. Singhvi said about the constitutionality, and there is another forum which will argue. Please remember, you have no constitutional authority to pass this bill, be that as it may. You have not even a moral authority to pass this bill. Yes. The treasury benches, when did they last win an election in Delhi? 15 years, Mrs. Sheila Dikshit was chief minister. I think there were 2 or 3 lieutenant governors. Please 1 minute. 2 or 3 lieutenant governors, and I was home minister for a while. Never once did the present present arrangement come in the way of Mrs. Sheila Dikshit functioning as perhaps one of the best chief ministers of this country. Just one minute. I asked you before I started, you said 10 minutes, therefore I'm speaking.
It's not 10 minutes yet. Sir, 9 minutes. It's 9 minutes. It's 9 minutes. Sir, it's You said if I... Sir, Now, my problem is when did the that BJP... everyone needs support of Jairam. When did the BJP last win an election? They won an election before 1998. 1998 to 15 years, Congress government was there. And after 2013, it's the AAP government. You won an election 25 years ago. What moral rights have you to speak for the people of Delhi and say this is what the people of Delhi want? This is not what the people of Delhi want. This bill must be rejected. Shri Mahesh Jaitlani. Honorable Chairman, I rise to support this bill. One second. Sir says it's getting louder. Decibel level has to be, is getting louder, sir. Yes, Mahesh Jaitlani. Sir, Dr. Singhvi, in his opening remarks, said that he made a lot of uncharitable comments, that this was a bill, hunkar ka natija, his exact words. He also said that we were Alice in Wonderland, constitutional arrogance. All these words were used, but I found very little in his speech regarding the legality or the constitutionality of this. I'm reminded about your lordship, my honorable chairman. Very difficult to wear two hats on the same day. Honorable chairman will recall, with all his eminence at the bar, it was an old saying. You are the third senior advocate. Yes, I am listening for the day. And trust me, I will go home and read every word of each of you have said and privately get back to you. It will be a deja vu moment for you. Anyways, we used to have an old saying in court that when a lawyer is strong on the law, he hammers the law. When he's strong on facts, he hammers the facts. When he's strong on neither, he hammers his opponents. A lot of that has happened today. So I'll come to Mr. Chidambaram has said that he'll not deal with the law in this matter. I don't blame him. For some time now, he's forgotten about law and compliance. So I don't blame him. Now, sir, let's come to the constitutionality of this bill. So the constitutionality of this bill is to be found in the Constitution itself. And that is 239AA. And I'll just read one provision. It may be a little pedantic for most people, but I'll just read. After all, sir, the Union Territory of Delhi is sui generis. The Supreme Court has said so in the 2023 May judgment. But when it said it was sui generis, which means unique, it meant that it was a sui generis union territory because it was the only union territory which had the privilege of having both a state legislature and a council of ministers. It is not a full-fledged state. That may be unfortunate. It is a sui generis, i.e. an escalated union territory with more powers than other union territories. Now, the provisions of the Constitution reflect that. If I may just read one article or one sub-article, 3B. Nothing in subclause A, which is the powers of the Union Territory of Delhi to legislate. It says, nothing in subclause A shall derogate, which means depart from, the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union Territory or any part thereof. Now, look, this is wide. Sir, this is wide. This is widespread. This is all-encompassing. It covers union list, state list, concurrent list. The union government can make powers, notwithstanding that there's a vacuum, on any matter in any of the three lists. So the ultimate power of the Union Territory of Delhi still vests, notwithstanding the fact that it's a sui generis union territory,
ultimate power vests in the union. That's point number one. Now, so what does the bill do? This really is a battle about control of services. It never arose in the past when Sheila Dikshit was the Chief Minister of Delhi, a reign which Mr. Chidambaram proudly flaunts. There was no question that she never thought that it was necessary to give Delhi full statehood in all the 10 years that she was in power. She never gave Delhi full statehood. Apart from that, she never thought it was necessary to have a provision like this because since times immemorial, and particularly since 1991, when Delhi got that sui generis status through 239, ever since it got that, it was almost accepted. It became a matter of convention that the powers of control over the services would vest in the union. And it did in fact happen. That was because the seat of government is New Delhi, of the union government. Parliament is here. Foreign diplomats are here. Embassies are here. So the seat of power being in Delhi, control over services in Delhi vested in the union government, and it passed muster over successive administrations. It was never questioned. Now, what does this bill do? This bill actually reflects the sui generis union territory status of Delhi. And I'll just read one provision. 45E is crucial. In the matter of transfer of postings, and transfer of the services, 45E creates a new body. It creates a body, an authority known as the National Capital Civil Service Authority to exercise powers conferred on and discharge the functions assigned to it under this part. Now, that body, the constitution of that body, reflects the sui generis nature of the Union Territory of Delhi, as also the fact that the ultimate control rests in the Union government. So the authority referred to in subsection 1 shall consist of the following members, namely the Chief Minister of the Government of National Capital of Delhi, who shall be the chairperson of the authority ex officio, and the other two members will be, so the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi is the ex officio chairman of the authority that will deal with postings and transfer. The Chief Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi member will be ex officio, and the Principal Home Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi, will be the member secretary to the authority. So the three-member authority will consist of the Chief Minister and two high-ranking bureaucrats from the center. This authority fully reflects the nature of the relationship between the Union Territory of Delhi and the Union government. This is reflective of that. Now, sir, what is the reason for this departure, if I may say so? This has been going on, as I said, since 1991. Control postings of services is within the jurisdiction of the union government. I see none whatsoever. The only change of circumstances that seems to have taken place, if I may use an analogy from cricket, with the respective parties who are chiefly concerned with this change, AAP, Congress, and the BJP, is that the Congress, who never had any problem with this issue about control of services, has now, like a batsman who has lost form and hasn't scored a half century for 10 years, is now seeking an alliance so that it can inch towards its first 50. The AAP is like a cricket team whose captain has been caught ball tampering. A vigilance report exists
and suddenly they want to become vigilant about the vigilance report. The BJP's present government is the third umpire. We want to stop this nefarious practice. A convention, a wholesome convention for better administration and for effective administration of the Union Territory of Delhi by the Union government now needs to be made into law, lest people subvert the services and hide their corruption. I wholeheartedly and with all the vigor at my command support this. Thank you, Chairman. Shri Abdul Wahab, 4 minutes. 4 minutes. Yeah, for me, it's more for me. Respected Chairman Saab and my colleagues are telling more about this Delhi bill. I don't have much to add to that one. My only wish is, this is for only for 8 months business. Next government is of India. So everything what is happening here is negative. And Amit Shah ji thinking that he will be always the Home Minister only. He don't want to be Prime Minister also. So the next Prime Minister already announced, third term I am the Prime Minister. Modi ji was already told. So what is the need of this bill, thinking that I will be always Home Minister? So my request is to take this bill, and anyway it is going to be negated by the next government of us. It is for sure. Yes. So India will be ruling, all this will be null and void. So my request to Amit Shah ji, at this point of time, don't be in the history, don't be a villain instead of a hero. So what happened in Kashmir? This word is not good. Wedding is not Using a word villain. Sorry, I am myself taking You back. see, all of I am us. withdrawing. One second. One second. All of us have to exemplify our conduct. Yes. So that it could be emulated by others. Yes. It is good of you. I took back. It is good of you to take snipe shots, but in the process, maintain decorum. I didn't mean and that. dignity. Go ahead. It is expunged. Yes. Go ahead. So my request to Amit Shah ji, it is happened in Kashmir and in here and maybe in Punjab tomorrow. I don't know. So whatever is happening in our immediate solution should be in Manipur and Haryana and other places. So I request Amit Shah ji to interfere in Manipur more than in Delhi affairs, small affairs. Some offices changing this and all. But this gentleman, our chief minister, came as a, what you call, I am telling, as a hero. I was thinking that they are the B team of BJP before I was thinking. But now only I came to know they are not the B team of BJP. They are also want to rule Delhi as a chief minister. So I stop this one asking again to Amit Shah ji to repeal this bill. Thank you. Shri Ranjan Gagoi. Honorable members, it is the maiden speech of the honorable member. I thank the Chairman, sir, for the opportunity. It's a great day, a maiden speech on a subject that is very dear to my heart, and a subject that can be as related to law as possible. So a maiden speech, I believe the chair is a little indulgent and gives a little more time, but I won't take much time. A maiden speech also has the protection of the House. It is freedom of speech in an absolute form. The member has a right to say on the first day whatever he wants. So, I would confine myself to the legality of the proposed legislation.
and I will address the House and the chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity. So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. Please. Would you please take your seat? No, absolutely no. 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 I don't force me. The House was going ahead. All right. Do you want me to go further? Please take your seat. Mr. Chairman, I sir. will not allow. This is not good. Mr. No one Chairman, was sir. interrupted. You suddenly rise. The House is getting enlightened. Trust me. Mark every word. The House is getting enlightened, as was enlightened by others also. Please go ahead, sir. Mr. Chairman, sir. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance, and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House, and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121, and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so where sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I have got and I've read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come. So far as overreaching or outreaching the order of the court, Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this:
the state legislature makes laws for the states, the parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do. Therefore, there is no question of overreaching. And what has the Supreme Court repeatedly said? Paragraph 164, 2 conclusions. These are the 2 conclusions. May I read out these 2 conclusions? The legislative 164C, the Legislative Assembly of the NCTD has competence over entries in List 2 and List 3, except for the expressly excluded entries. In addition to entries in List 1, in addition to entries in the Union List, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD. This is the conclusion in paragraph 164. C. Paragraph 164F. The executive power of the NCD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. So this is the conclusion of the Supreme Court. And therefore, now, what has the Supreme Court repeatedly held in the 2018 judgment and the 2023 judgment? Precisely this. And I'm very grateful for the fairness shown by the first speaker, Dr. Singhvi. If I'm not mistaken, what Dr. Singhvi said, the power of Parliament is not in dispute. He said it very fairly. The power of the legislative competence of Parliament is not in dispute. Then why would this law be bad? This law would be bad if it violates the fundamental rights, number 1. Number 2, if it violates any other provision of the Constitution, and if it violates the basic structure of the Constitution. Right. Honorable members, yes. I don't have to remind honorable members, it's a maiden speech. Yes, please. And the honorable member is making his point very rationally. Sir, it is one point of view. I will take. Well, the chair has taken a call. I will take 2 and minutes. Bear with it. No, sir, Sorry. you have 15 minutes. You have 15 minutes. Should we? So far as One as second. fundamental Honorable Honorable member, one second. That the honorable member, with whose experience in his matter, is making a point, and every time you rise and tell me time is over. It is my authority on a maiden speech. Sorry, honorable members, I have given adequate time to every member on the maiden speech. Yes. And I had every time pleaded with you to show respect. Merely because what the point is being made, it is required not to be registered, but to be digested. And you will have an opportunity to deal with it. We are getting input in this house
from a very experienced legal mind. We got it from Dr. Singhvi. We got it from Mr. Chidambaram. We got it from Mr. Mahesh Jethmalani. We have to get also from Mr. Gagoi. Please, sir. In any case, Honorable Chairman, sir, I have come to the end of it. Violation of fundamental rights. The only fundamental right that can be violated is perhaps Article 14, and that too, the limited part of Article 14, that the law is arbitrary. Is this law arbitrary? This doesn't appear to be so. The law may not be to my liking. That does not make it arbitrary. Next, does it violate the basic feature of the Constitution? Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andarajuna. Yes, yes. The former Solicitor General, on the Keshavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. I wouldn't say anything more. The doctrine of basic structure has a very debatable jurisprudential basis. In any case, Honorable Chairman, sir, what the bill provides is diluted form of what federalism, because it's a union territory, not a full-fledged state. Therefore, what you have is a diluted form, a asymmetrical form of federalism. And the third thing is, does it violate any other part of the Constitution? The Supreme Court mentioned about triple autonomy. What you have under the bill is a modified form of triple autonomy. The bureaucrat is responsible to a lieutenant governor, who is responsible to the Home Ministry, who is responsible to the House. You have a modified form. If you want a full-fledged federalism, which today is a basic feature, though I have my own perceptions there, you can go for an amendment, for a constitutional amendment, and make Delhi a full-fledged state. Now, the most important thing, Chairman Sir, is Article 239AA, starting from 1 to 7, is not under challenge before the Supreme Court. Challenge it. That is not under challenge. Therefore, in my respectful submission, my contention, the bill is perfectly legitimately valid. But I fully support Mr. Vikas Bhattacharya, who has been a very close associate of mine. What is permissible need not necessarily be right. In the House today, parliamentary democracy compels members to vote according to party dictates. Fine, I cannot quarrel with that. It's a small section of people to whom you appeal to their conscience. To me, the bill is correct, right? My conscience tells me to do something, I'll do it. But if somebody disagrees, his conscience must be left free. Thank you. I am honored. I'm privileged. Well, we have one thing in common. Dr. Vikas Bhattacharya is also my good friend and known to me for long. And I remember when he was mayor,
of Kolkata Municipal Corporation. Dr. Fozia Khan. Thank you very much, sir. Sir, I wish to express my profound concerns and my 9 minutes. vehement opposition to the bill, sir. This bill, as said by many of my colleagues, raises many constitutional apprehensions and threatens the very foundation of democratic principles and federal structures, sir. Sir, as already spoken by many, disrupting the triple chain of accountability jeopardizes the very essence of our democratic system and erodes the trust that the people repose in their elected representatives, sir. Sir, I think the most important in a democracy is the people. We must never forget that. Everything that we do here, everything that we do is only for the people. And if, sir, we talk about people, my question is, can the electorate be betrayed? If you are betraying the electorate, isn't it a betrayal of democracy? When the people of Delhi have laid their trust on a particular government, couldn't we even have waited till the tenure to get over so that we wait legitimately for that government to finish the tenure till we make it toothless, sir? Why do we have to make a government toothless? It is here, sir, that we are laying a crack on democracy, on the timelines of history. Sir, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम और आप यहाँ के कोई नहीं रहेंगे, लेकिन सर जो डिसीजंस हम लेंगे वो डिसीजंस आगे के जनरेशंस के लिए यहाँ पर रहेंगे। सर, सुधांशु त्रिवेदी जी ने और बहुत सारे ट्रेजरी बेंचेस के सदस्यों ने वैयक्तिक टिप्पणी की है केजरीवाल जी पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि अगर केजरीवाल जी से कोई गलती हो रही है ऐसा मान के भी चलते हैं तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए उसके लिए? मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है सर। पार्लियामेंट डज हैव द पावर टू मेक लॉ. I agree with it, sir. We are not disputing that. But the essence of democracy cannot be killed at any cost, sir. And here we are killing the essence of democracy. Mr. Tiruchi Shiva here spoke about constitutional morality. And I more than agree with him, sir, that constitutional morality also must be considered when we are talking about this. And that if we agree that this is a union territory, why do we have an assembly at all? Let us dissolve this assembly and finish it and make a proper union territory. If it is a union territory, Delhi has a special status, so we must not forget that. And if you have a special status, although we have the right to make a law here, sir, we have to see that the essence of democracy is protected. Sir, here in this parliament, we speak about the nation. When a government, sir, do I stop? 4 minutes. Go ahead, 1 minute more. So if a government comes to, if it is elected, the government gains many things, sir. It gains decision making, it gains power. पावर के साथ पुलिस है सर, पावर के साथ सीबीआई है, पावर के साथ ईडी है, पावर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पावर के साथ मीडिया है. लेकिन सर, it loses one thing. We must not forget that the government loses one thing when it comes to power, and that is, sir, whataboutery. Whataboutery is one thing that is the right and the duty of the opposition. But here what we see is, we are always talking about what about this. The moment the opposition says, what about this? An answer comes from there, what about that? What about here? Somebody says, what about there? So this is not the right of the government here. It is the responsibility of the opposition. Thank you, sir. Sri Sant. 4 minutes. See, 4 minutes.
ओनली 4 minutes. ऐसा कैसा चले? मेरा भी मेडन स्पीच है। देखिए संजय जी, संजय जी, ये चीजें स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती हैं, लंबे समय से हो रही है। सर 4 minutes. सर मैं इस बिल के लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं। चिदम्बरम साहब, डॉक्टर सिंघवी, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सभी ने इस बारे में बात किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए और इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। देखो 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है। सरकार, लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए है, एलजी को वोट नहीं दिया है। एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहां की बहुत से लोगों के, मेरे मित्र है, भाषण सुन रहा था। लेकिन आपकी आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। सर, आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप 2024 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना दिया है। लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडेन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। I requested the honorable members, and this is not a good tendency. सर, मैंने क्या बोला? No, मैंने गलत क्या बोला? One second. It is प्रधानमंत्री जी को Mr. Sanjay Raut, it is not that. के नाम No. से पुरस्कार मिला। Okay, your time is over. लोकमान्य तिलक का No, miss. Your time is over, Sanjay Raut. And when I say your time is over, I mean time for this address only. मेरा और 2 मिनट दिग्विजय सिंह जी, आप इतने सीनियर आदमी हैं। सर, मेरा और 2 मिनट बाकी। In this house,
we must have respect for constitutional functionaries. Let us not create a system which is not good. No. Priyanka. Message from Lok Sabha Secretary General. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed 1. The Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and 2. The Pharmacy Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Ghanshyam Tiwari, 15 minutes. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इसकी बहस की शुरुआत करते समय माननीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, उन्होंने चेतावनी दी बीजेडी को, वाईएसआर कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ जा रहे हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आग दूर तक आएगी। लेकिन सभापति महोदय, वो मेरे मित्र हैं, जोधपुर के हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो केजरीवाल जी के पास वो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को संभालें, क्योंकि केजरीवाल साहब के साथ जितने भी लोग थे जो शुरू में उनके साथ आए, चाहे प्रशांत भूषण जी आए, चाहे स्वर्गीय शांति भूषण जी आए, चाहे योगेंद्र यादव जी आए, चाहे कवि जी आए, या जितने भी लोग आए, वो सबसे पहले अन्ना हजारे आए। अन्ना हजारे की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर किरण बेदी की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर प्रशांत भूषण की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर शांति भूषण जी की बात उन्होंने नहीं मानी, योगेंद्र यादव जी की बात नहीं मानी। सबको उन्होंने अलग अलग अपने स्थान पर भेज दिया। अब उसके बाद में 2 आदमी बच गए उनके पास में, वो श्री मनोज सिसोदिया जी बचे और सत्येंद्र जैन जी बचे। जब वो नहीं गए तो उन दोनों को जेल में भेज दिया। इस प्रकार से उनके पास फिर कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। इसलिए अब अगर कोई खतरा है तो खतरा कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी उनसे सावधान रहे। और जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का साथ आने का सवाल है, सभापति महोदय, ये तो मुद्दा मैरिज है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारा इस बिल में आप समर्थन करोगे तो हम आपके साथ आएंगे, और ये बिल लोकसभा में पास हो गया। अब ये राज्यसभा में पास होने वाला है। इसके बाद में ये मुद्दा मैरिज टूट जाएगी और ये केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए सनीसर बनकर उनके सामने ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए वाईएसआर कांग्रेस को या बीजू जनता दल को करने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्वयं सोच ले कि उसका क्या हाल होने वाला है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं सभापति महोदय, उन्होंने बार बार एक बात की कि साहब नेहरू जी के समय बात हुई, ये बात हुई। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हमारे हैं, उनकी एक आदत है, वो लंबे समय से जो काम चल के आता है और जो पूरा नहीं होता, विवाद में रहता है, उसको पूरा कर देते हैं। जैसे आर्टिकल 370 नेहरू जी के समय से चलाया था, पूरा नहीं हुआ, इन्हीं सदनों में पास करके उन्होंने पारित कर दिया। वो पारित कराया, कराया सक्सेसफुली। और दूसरा, फिर इसी प्रकार से रामलला के राम जी के मंदिर के बारे में बोल रहे थे, वो भी इनके गृह मंत्री के काल में पूरा हुआ। और ये विवाद जो पंडित जवाहर, ये विवाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा था दिल्ली के बारे में, फेजल कमेटी बन रही है और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बन रही है, बाल कृष्ण की कमेटी बन रही है, और कई प्रकार से नगर परिषद बन रही है, नगर निगम बन रही है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बन रही है। ये सारा काम करने के बाद में 15 वर्ष तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद, मदन लाल जी खुराना के रहने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जब केजरीवाल जी आए, उन्होंने खड़ा किया। अब उस विवाद का भी समाधान आज माननीय अमित शाह जी के हाथ से हो जाएगा, और इस बार दिल्ली के बारे में कोई समाधान नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात जो यहाँ पर बार बार उठाई गई,
मैं उससे सैद्धांतिक रूप से मतभेद रखता हूं। माननीय गोगोई साहब यहां पर बैठे हैं, वो भी सुनेंगे, बड़े बड़े वकीलों की बात भी हमने सुनी है। कौन सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट करता है? फैसला नेता करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और संसद सदस्य करते हैं। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पहला संविधान संशोधन कब आया। पहला संविधान संशोधन इस सदन में आया जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्ट्रेट डाउन कर दिया। उसके बाद पहला संविधान संशोधन आया और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उसका निर्णय जनप्रतिनिधियों ने किया और एससी और एसटी को हमने रिजर्वेशन दिया। दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग आया माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस वाले सब भूल गए संविधान, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप भूल गए जब साबानों का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस। जब साबानों का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एक महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस समय कांग्रेस पार्टी को साथ सूख गया था। वो इसी सदन में संशोधन लेकर आई और संविधान के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। जो साबानों के केस में पेश पलट सकते हैं वो आज संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसके बाद माननीय सभापति महोदय और कितने प्रसंग आए। ओबीसी के आरक्षण का प्रसंग आया, ओबीसी के शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रसंग आया और 9 सदस्यीय बेंच ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को निरस्त कर दिया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलाया और 53 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निरस्त किया। इसलिए यह कहना कि यह संविधान की अवहेलना है, यह संविधान की अवहेलना भी नहीं है और यह लोकतंत्र की अवहेलना भी नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार एक बात, इतनी जल्दी क्या हो गई थी, इतनी जल्दी क्या हो गई थी। भाई इतनी जल्दी सरकार को पूछ रहे हो तो यहाँ की सरकार को पूछो, दिल्ली को, उनको इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला थी रात को 12 बजे जाकर ताले तोड़ने लगे। वो जल्दी कहां से आ गई थी, सब ये क्यों गई थी? तो ये इसलिए हुई। दूसरी बात, आज तक कोई भी दिल्ली की सरकार कोर्ट में नहीं गई। आदरणीय शीला दीक्षित जी भी नहीं गए, मदन लाल खुराना भी नहीं गए। ये किस लिए गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए। ये अधिकार उसके पहले इनके पास नहीं थे तो ये गए और गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया। जब ये कोर्ट के इतने ही भक्त हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मान लेते, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसके बाद में ये गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका केवल एक आख्यान पढ़ते हैं, बाकी 2 आख्यान जो भी माननीय महेश जी ने भी बताए और माननीय गोगोई जी ने बताए उनको पढ़ नहीं रहे। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये जो आया है आज, ये जो संविधान संशोधन का बिल आया है, ये ऑर्डिनेंस को जो वो करने का बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार आया है। और लेकिन किसी भी देश में सब जनप्रतिनिधि फैसला करते हैं। 1926 के पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था और वहां की प्रिवी काउंसिल ने तय कर दिया था कि अधिकार उनको नहीं मिल सकता क्योंकि ये कानून के अंतर्गत नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया और फैसला करने के बाद में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में तो पहले से है। ये जितने निग्रो हैं इनको वोट का अधिकार अमेरिका में नहीं था और अमेरिका की ब्लैक इन ब्लैक को अधिकार नहीं था और इनको जब वहां की फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं दे सकते, कानून में नहीं है, तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर उनको वोट का अधिकार दिया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों में हुआ। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ठीक है कि गलत है, वो नहीं है। भारत में भी आज तक के 50 उदाहरण है
जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलकर हमने जनहित में निर्णय किए गए हैं और ये दिल्ली के जनता के हित में सबसे बड़ा निर्णय माननीय अमित शाह जी लेकर आए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार कहना कि दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली का एक विशेष स्टेटस है, उस स्टेटस को सबने माना है। अब दिल्ली भारत की राजधानी है, एक भी दुनिया के किसी देश का उदाहरण आप नहीं दे सकते कि उस देश के अंदर वहां की राजधानी है, उसका अलग प्रांत हो। यहां पर विदेशी आते हैं, यहां पर इतने बड़े सम्मेलन होते हैं, और यहां पर भारत सरकार कितने काम कर रही था। अभी भारत मंडपम इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो केंद्र सरकार ने किया है। अब युगे युगे बाहर का इतना बड़ा जो म्यूजियम बनने वाला है, वो म्यूजियम भारत सरकार ही तो बना रही। तो ये इस प्रकार के काम दिल्ली में होना, दिल्ली में वार मेमोरियल बनना, दिल्ली में सारा काम होना, दिल्ली में सभी राजदूतों की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना, ये सब काम हो रहे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल की 3 बातें जो कही गई, न तो ये संविधान के विपरीत है, न ये लोकतंत्र के विपरीत है, न ये दिल्ली की जनता के विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के खास आदमी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि ये बिल ठीक है। पंजाब के कांग्रेस वालों ने कहा बिल ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेरी मुद्दा मेरी हुई थी, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा अगर समर्थन करोगे तो हम इंडिया में आएंगे, और आज ये जो पास होगा ये मुद्दा मेरी टूट जाएगी और वो इंडिया INDIA जो है उससे ए अलग खत्म हो जाएगा और ये 4 ही बचेंगे। क्योंकि पहला काम ये करेंगे तो उनके खिलाफ ही करेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में पहले इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी और कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल जी को बढ़ा दिया, बन गए। पर दूसरी बार जब आए तो कांग्रेस को पूरी को हजम कर गए, तो कांग्रेस साफ हो गई। इसी प्रकार पंजाब में कांग्रेस को साफ किया। अब आगे भी उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को साफ करना है, तो हमारी कहां लड़ाई है। तो ये जो काम है, और इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जितना सारा काम ये माननीय अमित शाह जी ने किया है और जो प्रस्ताव पेश किया है, वो सब बातों को सोचकर किया है। और एक विवाद जो इतने लंबे समय से चल रहा था, पेयजल कमेटी बने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की बने, सरकारिया कमीशन बने, फिर संशोधन आया और 91 से लेकर 15 तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। तो बोलने वालों को तो ये सोचना चाहिए था कि विवाद पैदा क्यों हुआ है। अब दूसरी बात, अगर ये संविधान के विपरीत होता तो इनको सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलता, वो स्टे भी नहीं मिला। ये वहां स्टे लेने गए, स्टे नहीं मिला। अब संविधान पीठ में गए तो संविधान पीठ इसको देखेगी। पहले ही फैसला कर दिया उन्होंने कि 339A के अंतर्गत सारे कानून बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को है, वो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये धमकी देना दूसरे को, और एक बात मैं साफ रूप से कहना चाहूंगा, माननीय चिदम्बरम जी ने एक बात कही कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं कई बार कहता हूं कि लोग अपने कृत्यों को भूल जाते हैं। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। फिर तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। कितने प्रांत कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने तोड़े। तो क्या कांग्रेस ने राज्यों के अधिकार खत्म कर दिए थे? वो कांग्रेस ने तोड़े। तो ये अधिकार केंद्र के पास। तो इस प्रकार पंजाब का विभाजन हुआ कांग्रेस के समय, हरियाणा बना, पंजाब बना, कांगड़ा मिलकर हिमाचल प्रदेश बना, ये कांग्रेस टाइम है। और संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं संशोधन क्यों लेकर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद और जस्टिस AK कृष्णा अय्यर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे देने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अध्यादेश जारी करके अपनी मेंबरशिप कायम रखी। उतना बड़ा गलत काम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो पार्टी पार्लियामेंट की बात करे, वो पार्टी कानून की बात करे,
वो पार्टी संविधान की बात करे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून, ये अध्यादेश संविधान के अनुसार है, दिल्ली के जनता के हित में है और ये उसी प्रकार से समस्या का समाधान कर देगा जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ। अब किसी को भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली की समस्या का भी परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये इस बिल में है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम जी। ऑनरेबल श्री वाइको जी, you have 4 minutes, sir. Mr. Deputy Chairman, sir, I crave your indulgence for some generosity. We small parties always face the same difficulty. So I kindly be liberal with 1 or 2 minutes. Honorable Chairman has been very generous. This debate is for 6 hours. You are getting 4 minutes. That's enough. That's why he's asking. Honorable, please. Honorable Vaiko ji. With all the force under my command, I oppose this abominable, undemocratic bill which strikes at the very root of democracy, the very root of federal spirit, at the very root of secularism, at the very root of social justice. Sir, the government of National Capital Territory of Delhi Bill 2023 has brought forth systemic shifts in the governance landscape of Delhi. While cloaked in the garb of administrative efficacy, the bill in many ways appears to erode the democratic fabric that is intrinsic to Indian polity. The bill notably clips the wings of the Delhi Legislative Assembly by stripping it of the power to legislate on services. This is a deviation from the norm, where a state legislature would typically have jurisdiction over subjects in the state list with exceptions. The establishment of the National Capital Civil Services Authority on the surface may seem like an earnest attempt to streamline administrative processes. However, delving into composition and powers exposes an unsettling reality. The Chief Minister, an elected representative, is rendered virtually, I should not use the word impotent, so he is rendered puppet within the authority. Now I recall what I read in history when I studied the college about the triumvirate in Rome, which was called a democracy. In Rome, when Julius Caesar but kept his sword. After his assassination, another triumvirate was formed and Antony took the reins of the power. Here, directly opposite what is going to happen in India. The triumvirate, these two principal secretary and cabinet secretary, they are the majority, and the chief minister only a puppet. So this is the verdict given by the people of Delhi has been thrown into the dustbin of history. Many governors are appointed by the government, the central government. The governors in the opposite ruled states, how they behave, how I am coming to the end, sir. Sir, these governors, what they do in my state, Tamil Nadu, the governor has not given assent to the has not given assent to the bills sent by the State Assembly. For all I am telling, please. State Assembly. So the Home Minister is sitting here. So he is the custodian of these governors. So these governors, what they do, You're very senior member. We are discussing this Delhi bill. Please. They do follow the philosophy of Hindutva and Sanatana Dharma
This is, sir, this is happening in my state, sir. Please. In my state. So the governors are behaving the agents of the central No, government. it will not go on record. Yes. Please follow rule number 0 and 240. No. They Please are speak on the bill. behaving as the Speak on the agents bill. of the central government. Speak on the bill. Your union time is government. over. Your time is over, sir. You please finish. Conclude. Time is over. Finish. It's This yes. bill should Already. be thrown out of history. Thrown Please. out of the. Thrown Thank out you. into the dustbin. Thank you, This Honorable bill. Vaikoji. Thank you. Thank you. Mani Hardeep Singh Puri ji. Mani Hardeep Singh Puri. Honorable Deputy Chairman, sir, one of the advantages of speaking so late into the discussion is that some of the most amazing statements bordering on the outlandish have already been responded to by others. And some of the facts will, I'm sure, be covered in great detail when the Honorable Home Minister replies to this discussion. But I picked up some gems and I thought I will share them with you. It was when the Honorable Chairman was presiding that words that were used included retrogressive, unconstitutional, control freak, principles of federalism violated, arrogant government, accountability, constitutional stupidity, cheap tactics, chicanery. Now, I would like to subject some of these terms to any dictionary of legal usage or normal linguistic usage. And I think much of this actually is applicable to what is being said by those who are opposing the bill, rather than the constitutionality of what we have brought forward. But I think the gem which I really enjoyed, and I think, sir, I say this out of deference to you because you yourself are such a high legal luminary, that when lawyers start quoting from historical figures, they should be careful. When they came for the socialists, I did not oppose because I'm not a socialist. Then they came for the trade unionists. I did not oppose because I'm not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I'm not a Jew, so I didn't oppose. Now they come for me. Sir, I want to humbly submit, they came for you. They first attacked you. And I'm talking about a period before the BJP government assumed office in May 2014. Let me remind you, because you seem to have selective amnesia. On the night of 15th and 16th of January, one of the so-called elected accountable ministers of the Aam Aadmi government, a gentleman by the name of Mr. Som Bharti, he attacked a colony of foreigners, and he used a mob as an instrument of politics. Some foreign nationals were subjected to cavity searches. So that's a very serious term. Cavity searches, basic human rights violation. They were subjected to, they were subjected to urine samples were tested, and they said, I know the honorable Congress member is encouraging you, but let me complete. You don't know where you will have to look then. Let me remind you. Sit down, you'll benefit from this. And Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. One second. Oh, no, first ask your colleagues to take the seat. 1 second. One second. First ask your colleagues to take seat. Yes. Now what is your point? Point is because he is naming the person who is not a member of this house. How he can name that person? Yes. Let me that this issue was addressed by me on a point of order raised by the leader of opposition. And I had categorically held that this house has the power to discuss conduct of anyone. This house has the power to discuss anything under the planet. And as a matter of fact, this issue was signaled by former Chief Justice Mr. Gogoi also. If it is with respect to
member of a Lok Sabha, then there is a set procedure that before making accusations, notice has to be given. So don't get upset. Don't get upset. Don't get upset. Mr. Chairman, sir. One second. Let me tell you, Mr. Gupta, if you get upset, you will be helping Mr. Puri. You will be helping Mr. Puri if you get upset. Please. Sir, आराम से बोलेंगे, इनका टाइम नहीं जाता इसमें. sir, this unfortunate incident, which we would all want to forget, but which my friends, those who are opposing this bill, perhaps want to forget even more, took place on the fateful night of 15th and 16th January 2014. Sir, I wrote about it even then. I have a publication which has these and other such incidents documented. And these were, I can give them the citation, these were much before the BJP government under the leadership of the Honorable Prime Minister assumed responsibility. Sir, this did not end here, because the then so-called accountable Chief Minister, who did not succeed in persuading or using the margin of persuasion with the Delhi police force, then decided 3 days later to hold the entire city to ransom by going on a strike at Rail Bhavan for 36 hours. It was, sir, on the 20th of January 2014. And all he wanted was, those 3 police persons who did not support that vigilante type of action against those foreign ladies, they should be suspended. And sir, because we had a government in power in Delhi at that point of time, they followed the policy of appeasement. They indulged this kind of behavior. And 2 of the policemen were transferred because they were afraid that the 26th January celebrations would be thwarted. Sir, these are the facts. And let me not stop here. This was an action in January 2014. Now, this bill speaks to the heart of governance. Heart of governance. What does governance say? इसमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है. Sir, what does the heart of governance say? And I'm very happy that my परमिशन की जरूरत नहीं भैया. my chance to speak came after my learned friend Shri Mahesh Jetmalani and others. But since I'm not a lawyer and I was preparing for this intervention, for which I'm deeply grateful to my party, there are 2 or 3 things which stand out. This particular insertion in 1991 and 239, what does it seek to do? It acknowledges the sui generis character of Delhi. The honorable member mentioned there was a reality. It is a union territory, yet it has a legislature, elected government. So he used the term escalated union territory. But that sui generis character needs to be acknowledged. It needs to be fleshed out. And that is precisely what the bill that the government has brought is seeking to do. Now, the civil service authority which is being established, I found it appalling that someone can get up here and say one member is supreme. Yes, he's an elected chief minister. He deserves full respect. He deserves to have his position as primus inter pares in this 3-member committee acknowledged and respected. But to say that the other 2 are against the whole system, or they have been appointed and their integrity is in doubt, is an outlandish statement, if I may submit. Let me now read out to you how they treat their chief secretaries. Sir, I have in front of me the copy of an FIR filed a few months later. It was filed on 20th February 2018. The then chief secretary says that he received an information yesterday, that is 19th February. I was informed on telephone at 8:45 p.m. in the evening that the advisor to the Chief Minister, Shri V.K. Jain, that I had to reach the CM's residence at 12 o'clock at night.
Sir, I'm not going to read out the whole FIR, but I'll read out some salient portion. He had already met the Honorable Chief Minister at that point of time, earlier in the day. He was to meet the Chief Minister again the next day because there was a cabinet meeting. And the contents of this FIR, sir, are amazing. He says he was told that if some advertisements that were the Honorable Chief Minister desired and some of their MLAs desired, if those advertisements are not released, he better come there at 12 o'clock. The Chief Secretary reached the Honorable Chief Minister's residence. He thought only the Deputy CM would be there, Shri Manish Sisodia. But to his surprise, 11 other MLAs were there. And they sat down and started questioning the Chief Secretary in an aggressive manner why those advertisements were not released. To which the Chief Secretary replies, as part of the FIR, part of the subsequent legal records, that those advertisements could not be released in the light of the Supreme Court directives. Then what happened is even more amazing. The Chief Minister and the Deputy Chief Minister are present, and the Chief Secretary is physically assaulted. No, I'm not surprised. I'm not surprised. Honorable member, इसका जवाब आप जनता के सामने देना, आप भूलना चाहते हैं इसको, हम आपको याद करवाएंगे. One second. Honorable Minister, a copy of this FIR be laid on the table of the House. Here and now. Okay. Now I want to come to the subsequent stages of what happens. Sir, initially when the case came up in the preliminary legal stages, the government of the National Capital Territory of Delhi took the view that no such incident took place. Total denial. When it went up to the next stage, they said, हाँ incident तो हुआ था, पर इसमें Chief Minister और Deputy Chief Minister ने हाथापाई नहीं की, उनके MLAs ने की हैं. साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में आप MLAs को बुलाते हैं, उनको कहते हैं Chief Secretary की पिटाई कर दो, तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं चलेगा. ये इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा. और ये सब legal. Now let me come to a few substantive things, sir. I have had the privilege, sir, of being Minister for Housing and Urban Affairs. Now, Nothing will go on record. sir, I've had the privilege of being the Minister for Housing and Urban Honorable Affairs. members, I have heard from this side also, from every side of the House. One sec, Mr. Gupta, you'll have to lend some ear to me and be a little patient. There have been inputs that have been absolutely beyond the bill. When I tried to request the honorable members to be in the group, they said no. And I have had a number of them saying so. If the honorable minister is making an input, hear him patiently. When there is an occasion for someone from this side, you will have an occasion. But can we create ruckus in the House like this? So no, I will not lend it. क्या कहा? ये झूठी FIR थी, कोर्ट से खत्म हो गई. Sir, let me shift now to a second segment of my submission to this August House through you, sir. I've had the privilege of being the Minister for Housing and Urban Affairs at least now nearly 6 years, sir, from 3rd September 2017. Sir, on many such occasions, I've had to appeal to the Honorable Chief Minister for the implementation of central schemes. When it came to the unauthorized colonies and their regularization, I had to write a letter to him. I'm placing that on the table of the House also, about the false narratives that they were creating. But let me come to some basic issues, sir. When it comes to schemes which have the Capital Territory of Delhi as an equal participant, let me give you, sir, something like the Delhi metro system. Sir, they are still sitting. There have been constant delays
in getting approvals for metro and RRTS projects. The signing of the tripartite MOU for DMRC Phase 3 and Phase 4 for 3 priority corridors is pending despite several reminders to the GNCTD. Recently, sir, they are co-partners with us for the RRTS and they would refuse to part with the remaining 415 crores. The matter was agitated before the Honorable Supreme Court and the Supreme Court asked them, how much money have you spent on advertisement? So the reply given to the Supreme Court by the Capital Territory of Delhi government was that they have spent 1,100 crores on advertisements in the last 3 years. In 3 years. And they could not release 415 crores for the RRTS. So this again, एक ऐसा मुद्दा है जिसपे इनको दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा. Or so let me give you one or two other some examples, sir. A reference is already made in terms of dealing with institutional mechanisms. Let me also tell you, sir, that the 400 or so specialists or consultants who were hired, well, I'm very happy that the Lieutenant Governor has finally terminated their services. What services they provided at exorbitant salaries, perhaps they might like to inform the House about that. But there was another expenditure, sir, where they incurred 60 लाख का खर्चा किया कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए. इक्विपमेंट 60 लाख की है और उन्होंने विज्ञापन उस पे किया 23 करोड़. I will place those facts in front on the table of the House also. Sir, very often, we are told that the central government starves the government of Delhi and the MCDs and everybody of funds. I did a quick reckoning, sir. Since 2014, we have given to these different bodies under the urban development funds for other schemes a total of 52,052 crores, sir. 52,052 crores. And what we witness, जो हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, मैं इसके एक का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मनसुख भाई मेरे साथ, my honorable colleague is sitting next to me. Some of the most successful schemes, sir. आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा है इलाज करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर. ये इन्होंने दिल्ली में लागू ही नहीं की. इन्होंने कहा कि हमने शानदार वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं. वो हमारे कुछ लोग हैं, उनको शुरू में पसंद आते हैं, फिर वो समझते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये तो काफी फटीचर टाइप है, तो फिर उनकी निंदा कर देते हैं. देखिए सर, ये आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कन्वीनियंट मैरिज. कन्वीनियंट मैरिज क्या होती है सर? कन्वीनियंट मैरिज मेरे हिसाब से वो होती है जो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस होती है. तो वही कांग्रेस पार्टी जिनको इसमें वो लग रहे हैं, पहला अटैक तो आम आदमी पार्टी का उन्हीं के खिलाफ हुआ था. अल्टीमेटली इसकी पैदाश कहां से हुई थी आम आदमी पार्टी की? सर, it was we also welcomed it. I must say, as a private citizen, when I found a social movement headed by a highly respectable Anna Hazare against entrenched bhrashtachar, entrenched corruption के खिलाफ. But today you wonder who started the movement and who has become the prime mover and where is this leading to? So I make the submission to you, sir. I have no desire to take more time than is necessary because I told you I have already seen that most of the question and those absurd statements have already been responded to by others at the legal front, and I'm sure that the Honorable Home Minister, when he's responding to the debate, will provide. But in conclusion, sir, let me ask through you one question. Why do we have selective amnesia? कुछ चीजें हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. अच्छा, शब्द जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, आपने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब जुडिस है, ये है, ये वो है. मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं.
अगर आपके पास लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो चिदम्बरम जी ने बिल्कुल सही कहा कि लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड बाय डॉक्टर सिंघवी, तो इसलिए वो पॉलिटिकल करे। पर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये चाहते क्या है? डू यू वांट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ एनार्किज्म? और ये एनार्किस्ट का शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब रेल भवन में उन्होंने 36 घंटे he held the city to ransom, he said, and he's on record, I'll make that cutting also available, I am an anarchist. So this political formation, sir, a startup, has not made the transition from anarchy to governance, and this bill is about governance. They should rejoice, they should welcome it, and they should participate in mature governance till they are in office. बहुत बहुत धन्यवाद, sir. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 has agreed without any amendment to the Mediation Bill 2023, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 1st August 2023. Honorable members, as you are aware, discussion on the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, which has been allotted 6 hours for discussion, will continue beyond 8 p.m. today. In view of the extended sitting, for the convenience of honorable members, dinner will be served in Banquet Hall, Parliament Library Building from 7:30 p.m. onwards. Members may accordingly make use of the arrangements. Dr. M. Thambidurai, 4 minutes. Sir, I am former law minister. You have given so many people. I am former law minister. Sir, the world is very Give me cruel. some more time. It takes note of the present. No. All of us have that feeling, No. you see. Please, sir, I was this is a very former for a very important long bill time. brought by Honorable Hamid Jaji. I want to support this bill. Give me some time. Because as a law minister, former minister, I want to say something. Let me tell you, Mr. Thambidurai, you have been a former law minister. Sir, Whenever there is a bench of judges, sir, you are the wisest judge is one who says, I agree. Sir, time is back, please. Sir, you are a legal luminary. I am ordinary law minister at that time. You please allow me to speak. 4 minutes. Sir, on behalf of ADMK party, I support the bill brought by Honorable Home Minister Amit Shah ji regarding to seek that to promote harmonious relations between the legislature and executive and further define the responsibility of the elected government and the lieutenant governor in line with the constitutional scheme of governance of the National Capital Territory of Delhi. Sir, you know very well the Article 1 of the Constitution of India defines the territory of India as comprising of states and union territories and nothing else. And Article 1 read with Article 239 provides that the union territories to be governed solely by the president. Sir, I want to make certain points because our eminent lawyers, Abhishek V. and Chidambaram, they argued about the bill against that. They are the eminent lawyers. If they come this side also, they will defend the bill also. They have the capacity. Therefore, as lawyers, they made their points. That is different, sir. But the crux of the point what they said regarding the federalism and the rights of the union territory, the state governments and union territories, everything they argue. I want to know what is the present status for federalism? Who is responsible for decentralization of this government? This is your government, Congress government. The Congress government, they are responsible for this kind of anarchy and take away the state rights. That is, everybody knows that. Especially 1976 emergency period, nobody can forget the Indian history. How this former Prime Minister, Srimati Indira Gandhi ji, how she brought certain rules and taken the state powers, including education. Who did it? But whether central government did anything for that? But if they thought they would have
brought, even DMK was afterwards convinced by the government so many times ruled, if they have told, they have brought 1 second education to a state subject. But they have not done. Because why I'm telling, the federalism, everything's gone arguing. When they are opposition, they are arguing for federalism. When they are coming to the power, they want to decentralize all the power. These are the things are happening. And centralize, they are centralizing. This is the power. Sir, just now I started. 1 minute. 1 minute. 1 minute. For example, even finance, sir, who brought the GST thing? Because our DMK government is criticizing GST. We are also against that. Who brought that? But Chidambaram only finance brought that. See, all like that, there are so many times, sir. And also, because you are going ringing bell, I want to crux up the point. I don't want much of the time. Because I'm supporting Amjaji, what he has brought. See, that because what they said, why the special status only for Delhi? We are demanding for Pondicherry has to given the statehood. Whether they have given, whether Congress has given, they are not given. But because of the peculiar situation and based on the Supreme Court judgment, now Honorable Minister has brought it to see that protect the interest of the GK. Just I'm finishing, sir. 4 minutes. Sir, I'm finishing. I'm finishing, sir. Parliament, they are telling who are the people? This Parliament is Parliament is responsible. The elected people. We are enacting the bill. We are responsible. Given the governor taking any decision, GK the Home Minister. Shri GK Vasan. Thank you. Shri GK Vasan. 4 minutes. 4 minutes. Sir, I stand here to support this important bill, sir. Sir, I want to echo the views of common public in Delhi, sir. Delhi being the capital city of India, sir. Delhi public feel this is a symbol of India, sir. The bill, sir, they feel it is necessary to balance the welfare of the people in Delhi, sir. This act is required to balance both local and national interest in the capital city with democratic will, sir. More than that, sir, the status of NCTD cannot be equated with other union territories with legislature, sir. Therefore, the people feel center has a much bigger stake over legislature in administration and enforcing law and order in the NCTD, sir. Sir, most important, sir, this bill is also inconsistent with Article 239 AB of the Constitution, which empowers the President to make regulations for the peace, development, and good governance of the Delhi, sir. Sir, this bill, sir, will also be essential for public order in Delhi, security in Delhi, administrative improvement in Delhi. To conclude, sir, I would like to say narrow political opportunism cannot take precedence over good governance and national security at large, sir. Therefore, my party strongly supports this bill. Thank you, sir. Shri Bhuvaneshwar Kalita. Not present. Shri Javed Ali Khan. 4 minutes. Yes, sir. माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत मधुर रहा। बहुत सारे वकीलों की बात भी सुनी और जज साहब की बात भी सुनी, सीनियर लोगों की बात भी सुनी और कुछ जो हमारे बाद सदन में आए थे उनकी बातें भी सुनी। एक बात बड़ी प्रमुखता के साथ उस तरफ के साथियों ने उठाई, मुख्य सचिव की पिटाई का मामला। एफआईआर हुई, आपने टेबल करने के लिए कह दिया। मैंने ये निवेदन किया था अपनी जगह से बोलते हुए, शायद आपने सुना नहीं, कि उस केस का हश्र क्या हुआ, वो फैसला भी कोर्ट का टेबल कर दिया जाए, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर।
वो मनगढ़ंत केस रखा गया था, झूठा साबित हुआ कोर्ट के अंदर। पुरी साहब कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से बोल लेते हैं लोग, आधी बात छोड़ देते हैं, आधी बात कह देते हैं, जो मतलब की होती है वो कह देते हैं। उन्होंने भी ठीक यही किया है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आधी बात प्रस्तुत कर दी, और जो उस कोर्ट केस का हशर हुआ था उसके बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। I direct you to place that judgment on the table of the house. Okay, we will do, sir. Go ahead. पर अपील हुई है वो भी रखवाई, जजमेंट फाइनल नहीं हुआ है, अपील हुई है हाई कोर्ट में। And honorable members, I had indicated on number of occasions, this house, बढ़ा दीजिएगा। no, this house cannot be a platform to set afloat narratives which are not factually tenable. सर मैंने तो You have made an assertion in the house, मैंने अभी तक and कोई you have गलत not बात, given a complete picture. कोई नियम I विरुद्ध बात, direct you to put it on the table of the house. मैंने कोई Go ahead, गलत go बात, ahead. कोई नियम विरुद्ध बात तो कही नहीं है सर। हम तो आपका रोज ही सुनते हैं, जो आप हमें We बताते have हैं to हम do मानते our भी due हैं। diligence. One second. We have to do our due diligence. सर सारी We have बहस to do सुनने our के बाद, homework and then come to the house. Go ahead. सर सारी बहस सुनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये दिल्ली में कभी वापस सरकार बना पाएंगे, इसलिए दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते हैं जिस तरीके से भी हो। ये चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं सर। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, गृह मंत्री जी अगर चाहें तो मैं नाम भी ले दूंगा। एक सांसद ऐसा है जो हर हफ्ते तो नहीं, हर महीने एक न एक अधिकारी को पीटता है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर पाती है, ना गृह मंत्री जी उसके खिलाफ कुछ कर पाते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जिसका केस भी कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके लिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। Honorable member, you have made a serious assertion. Yes, sir. Entire documentation, Yes. which I is have many legitimately press cuttings. I in have public many domain, press be placed on the cuttings. table of the house. I have many press cutting of an MP. Place it on the table I will, of the house I will, during sir. course of the day. Sir. During course of the day, please, Professor, sit down. Sir. Professor, sir, we cannot allow free fall of information. Sir, एक बात No, भी ऐसी नहीं कहूंगा। this is not a platform or ground for accusation. Sir. Mr. Gupta. सर एक बात भी ऐसी नहीं कहूंगा जिसका Mr. Gupta. सर एक बात भी ऐसी नहीं कहूंगा जिसका साक्ष्य So I take it. Yes, that's all I said. I don't know why other members are agitated. Dr. Keshav, I am surprised why the members are agitated. The honorable member is prepared to lay it on the table. Yes. I said during course of the day, take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your seat. Take your seat. सर इस बिल के पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है, अब इसका डॉक्यूमेंटेशन मत मांगिएगा सर, वो मैं दे नहीं पाऊंगा। I will, if that is required. Think twice. It has serious consequences. ओके सर, सर लिसन भाई, इस बिल के पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल का पद भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है नहीं सर, है क्या? इसमें नहीं है, इसमें नहीं। और मुख्यमंत्री की हालत दिल्ली के एक नगर पंचायत के चेयरमैन से, टाउन एरिया के चेयरमैन से भी गई गुजरी हो जाएगी। लिहाजा मैं बीजेपी के साथियों को और सरकार को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इधर उधर की बात मत करिए। अगर आप सही सोचते हैं कि दिल्ली में बहुत गलत शासन चल रहा है, तो दिल्ली की विधानसभा को ही खत्म करके यहां इसको नगर पालिका या महानगर पालिका जो बनाना चाहे बना दीजिए। मेरा कुछ टाइम खराब हो गया था सर बीच में बातचीत, Accommodate कर लिया है। Accommodate कर That दीजिए। time has been accommodated. No, it has to be accommodated. It started late. Shri अरे Bhubaneswar Kalita. सर मेरी बात, Shri थैंक यू
Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity to speak on this very, very important bill on the government, on this amendment bill. Sir, some of the questions, the opposition members has raised few questions on the unconstitutionality and morality and the undemocratic nature of the bill. So that all has been tackled and handled by our jurists like Mahitat Malini, Justice Gogoi has very well explained the constitutionality of this bill, and I think our friends in the other side will be satisfied with that. So I will not go much into that. I only want to explain certain things which has come from the opposition members, and some of the members have, and most of the members are comparing with their state, like Tamil Nadu, like West Bengal or Bihar. They are talking about a state, but here in this bill we are not talking about a state, because Delhi is not a state in the true sense. It is national capital territory, and it falls under special provisions mentioned in Article 239 to Article 242 of the Constitution, The Article 239 AA 3B grants Parliament the authority to legislate for Delhi and its related matters. Delhi's government functions according to the procedures outlined in the Constitution. It is a unique administrative unit with specific legal provisions governing in governance. So it is a completely different case. It's not like any other state that they are comparing and they are making their statements. So the question that was raised by was about Supreme Court, that this is pending in the Supreme Court. So the matter which is pending in the Supreme Court is different. The issue is different, and this is a different issue. The Supreme Court explained that the union government wants control over certain services. A new law is needed. That is what the Supreme Court says. This new bill is being passed to make that happen. The entity with the authority to create laws and rules is the same one that can make rules under the Act. In this case, it's the union government. So here I want to point out certain things which has been raised by our friends in the opposition in the other side. So they say that the bill is undemocratic. So the bill is not undemocratic. Had it been undemocratic, it would not have come in the parliament at all. So, and what kind of democracy they are talking about? The democracy, the legislature which is functioning in Delhi, the Legislative Assembly of the NCT of Delhi is unique as it does not experience prorogation. In 2020, there was just one session. So, just one session in 1 year, comprising 5 brief sittings over 2 days, solely for budget purposes, for the passage of the budget. Similarly, sir, in 2021, 2022, 2023, only one session took place, all centered around passing the budget for the respective fiscal years. So, they talk about democracy, where the legislature doesn't sit. It sits only once in a year to pass the budget. So, another thing that it is in the knowledge of them and us all, that the infrequent convening of cabinet meetings. You see, in a democratic government, cabinet is supreme and cabinet has to be taken into confidence. But here, the cabinet, both in 22 and 2023, primarily cabinet was summoned to address budgetary concerns. This approach of the government is seen as problematic, as it may
impede effective administration and decision on implementation. Notably, the absence of crucial actions such as presenting Comptroller and Auditor General report, which is a constitutional obligation, for the past 2 years misses the questions about the transparency and accountability. So, when the cabinet doesn't see, when the assembly doesn't see, where CAG report cannot be placed, where is the transparency and accountability? So, as we all see that in this in the authority, one of our members said that CM's position has been made redundant. Sir, what for that redundancy is what I want to explain here, sir. The backlog of crucial files pertaining to prominent institutions like Regional Rapid Transit System, AIMS, the IIT Delhi, indicates a lack of expeditious decision making within the government of NCT Delhi. These delays have raised concerns about the pace of development and implementation of essential projects. So they are not interested about these projects, which are for the people, which are for the benefit of the people. But they are not interested in this. Our Honorable Minister for Housing has eloquently explained about that, so I need not repeat that anymore. Sir, today's world is going ahead towards a modernization. But here we see, while a 5G technology initiative was accepted by numerous states, including our many states, including those ruled by different parties, the NCT of Delhi has refrained from endorsing it, citing its perceived lack of relevance in the city's development. So, sir, they are not interested in public work. They are not interested in work of the digital world. They do not want 5G. So, what they want to say? What they want? They want only power. The bill for them is power. Because that the Chief Minister power has been clipped. So that is their objection. That is their complaint. Sir, this bill is not of power. This bill highlights the plight of the people and to make the life easy for the Delhiites and the capital. Sir, we all live in this capital. We all MPs will live in this capital, and we all see what kind of. The other day, one member has said that there was water shortage. Why? The water shortage was because of flooding. So, 9 years of this government, the flood problem has not been solved. So, we remember, if we all remember, during the COVID pandemic days, there was shortage of oxygen. Why? 8 plants were granted to Delhi government. 8 oxygen plants were allotted to government of Delhi, but they did not put up those plants. 1 or 2 they have put up, others were not put up, and that is why there was oxygen shortage. But for that also, they blame the government of India, the central government. So, sir, I want to support this bill with all my support, and this is a very important bill, and this bill should be passed unanimously. That is my appeal. Thank you, sir. Shri Santosh Kumar P, 4 minutes. Thank you, Chairman, sir. I take this opportunity to oppose this undemocratic, anti-federal, unconstitutional bill introduced by the Manipur Shame Union government. Sir, if you go through the pages of history, one thing can be easily understood. That one organization, I don't want to name it, based on Nagpur, was from the very beginning itself opposing the concept of federalism. They thought the concept of federalism is actually anti-Indian, so they always stood against that concept. And
I think my party, the Communist Party of India, thinks that this attack in the form of this bill is a new addition to that continuing attack on federalism. And I would like to ask the Honorable Home Minister, who is present in this august house, the statement, objects and statements, a detailed list is given. It is stated that any decision taken or any event happening in the capital of the nation not only affects the residents, and many things are stated, and national reputation, image, credibility, and prestige at stake in the international global spectrum. So I would like to ask you, Mr. Home Minister, can you cite even a single incident, single example to justify your position? You are insulting the people of Delhi. The democratically elected government, is the democratically elected government of Delhi is responsible in any of the international forums? Anyone discussed about these issues? Unfortunately, so as to say, the international community is discussing about Manipur. I am sorry to say, the treasury benches were vocal against the failure of the Delhi government. May I ask you, it was the European Union Parliament which discussed about one particular Indian state. I don't want to name that because that will create problems here. They don't want to hear the name. More than 6,500 cases were registered, FIR. Not even 500 were arrested. So, in one state, your government have failed like anything, and now you are blaming the Union Territory and its government, Delhi government. So, it is so shameful from your side. And let me ask you one more thing. There are many provisions which is unconstitutional, anti-federal in this. Because of the shortage of time, I don't want to mention more. Let me ask you one important question. Most of you people may be indebted to the BJP recently because of many factors. But at least you should learn the history of BJP political party. As a political party, BJP once upon a time stood for the Delhi statehood. Full statehood. Advani, L.K. Advani, the forgotten hero of your party, in 2003, drafted a bill suggesting the full statehood of Delhi. And what is your position now? Why you are forgetting all these things? And this this Delhi bill actually makes the chief minister's position fourth. First, the lieutenant governor. Secondly, the secretary. Third, another officer, and the fourth one is chief minister. And what a shame is that. So why we need a democratically elected government in Delhi? Amit Shah could have brought with a new bill suggesting the abrogation of the Delhi administration. This was the best thing. This was the best thing. So this is an insult to the democracy. And let me tell you, sir. Conclude, please conclude. Yes, I'm going to conclude. Some of our friends, especially from Orissa and Andhra Pradesh, were very vocal today. ED might have knocked more on the doors today, but we are not fearful of the ED. We oppose this bill. This is anti-India, anti-democratic. So we appeal all of you to oppose this bill. Dr. Anil Jain. धन्यवाद सभापति महोदय। 10 minutes. महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न केवल दिल्ली बल्कि देश के नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह विधेयक दिल्ली की विशेष ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को देखकर लाया गया। महोदय, मैं इस बिल की संवैधानिकता और वैधता के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बहुत बात हुई है। मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की पैरा 86, पैरा 95, पैरा 164C, इसके तहत इसमें साफ कहा गया है कि संसद को अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसकी बात मुझे लगता है कि अब इसमें कोई विवाद नहीं रहा है। उस पक्ष के लोग भी और इस पक्ष के लोग भी इसके बारे में अब विवाद से दूर हैं।
तो ये एक बात तो तय होती है कि संवैधानिकता से परिपूर्ण है और ये अधिकार क्षेत्र में आता है मान्यवर। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक माननीय सदस्य ने बोला था कि अध्यादेश कब लाए जाते हैं, कि विषमता हो या आपात स्थिति हो। ये सही मायने में विषमता ही पैदा कर रहे थे। इस दिल्ली में ये विषमता पैदा कर रहे थे, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा मान्यवर। जब 11 मई को 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हालांकि उस आदेश में 2 जज की खंडपीठ के लिए निर्णय देने के लिए कहा गया था। उस आदेश में इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ था, लेकिन इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको तुरंत उसी शाम को इंप्लीमेंटेशन करने का प्रारंभ कर दिया, जबकि 2 जजों की खंडपीठ को इसको निर्णय देना था। उसकी डेट नहीं लगी, मैटर नहीं लगा, निर्णय नहीं आया, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया और सतर्कता विभाग की फाइलों को ढूंढना शुरू कर दिया। सतर्कता विभाग के सचिव को, विशेष सचिव को बुलाकर निर्देश देने प्रारंभ कर दिए। सोशल मीडिया में जारी कर दिया कि आशीष माधव राव 11/5/2023 के 11 मई के निर्णय में पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो बैठी ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि और इंप्लीमेंटेशन में भी क्या किया इन्होंने सतर्कता विभाग के निदेशकों को आदेश दिया कि सतर्कता विभाग के सचिव और स्पेशल सचिव इनको रिपोर्ट मत करिए, इनकी बात मत सुनिए, क्योंकि ये फाइलें अपने कब्जे में करना चाहते थे। मान्यवर, ये फाइलें क्या थी, क्यों चाहते थे ये? मान्यवर, ये मनीष सिसोदिया जो जेल में है, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस के पास थी। ये उस फाइल को कब्जे में करना चाहते थे, ये सबूत बिगाड़ने चाहते थे। मान्यवर, अरविंद केजरीवाल जी जो इस देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर जो सादगी के प्रतिमूर्ति बनते थे, जो आंदोलन की उपज से पैदा हुए थे, ऐसे केजरीवाल जी ने अपने बंगले पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए और उसकी फाइल उसमें है। इसलिए ये सतर्कता विभाग को कब्जे में लाना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल उसमें है, इसलिए ये विजिलेंस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 90 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार ने जो उसके विज्ञापन पर खर्च किए, उसकी फाइल विजिलेंस पे है, इसलिए लेना चाहते थे। 433 जो गलत नियुक्तियां की, बगैर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, बगैर यूपीएससी के, बगैर स्टेट सर्विस कमीशन के, इन्होंने 437 लोगों की नियुक्तियां की। और किन लोगों की नियुक्तियां की? ये उन लोगों की नियुक्तियां की जो इनके नाते रिश्तेदार हैं, इनके विधायकों के नाते रिश्तेदार हैं। Your point of order. I've been asking for a long time. One second. Your point of order. Point of order is, sir, 238. The speaker, sir, the speaker. My point of order is 238. The speaker continuously he made the derogatory statement and used some names. He mentioned some names, sub judice, and his speech also sub judice. Yes, Mr. Pathak. So there are two specific points of order. One second, Mr. Pathak, raise your point. What were you saying? Sir, I just have one small point to submit. No, not point. What is point of order? I have a point of order. Then why Mr. Pathak is standing? The point of order is Can you at take your seat? 238 and 238 continuously, sir. Mr. Pathak, are you raising a point of order? Yes or no? 238, sir. The point you are of raising order. a point of order. Yes. Please yes. do that. Mr. Raghuchara, take your seat. I also have a separate point of order. Doesn't matter. Sir, this Let me deal one by 238 one. says a member while speaking shall not refer to any matter of a fact on which a judicial decision is pending. He has been continuously alleging, sir, the matter which is sub judice. He has been also naming a leader. So make a personal charge against the member.
He's Mr. Jain, अभी स्पष्ट Mr. किया Jain, है you member must of take your parliament seat. को हाउस में पकड़ने Mr. Jain, you take your Please, को रोक नहीं सकता Mr. Jain, Mr. Jain, take your seat. Please. One second. Only Mr. Pathak. Right, sir. One second, please. Let Mr. Pathak raise a point of order. Mr. Pathak, what is your point of order? My point of order is this, sir. It is 238. I am reading it out. Yes. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Number one. Number two, make a personal charge against a member. Reflect upon the conduct of a person in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper items. Sir, the said member has been using name of a leader and the matter is sub judice. For the same thing, you have called the name of another leader. Mr. Pathak, So I would request. Mr. Pathak, can you give details of a judgment which is pending? Details of money, Mr. Manish Sisodia's name. Can you give some details? Can you give some details? What is it? What is it? You must raise a point of order. Yes. After due application of mine. I'll explain, sir. Please let me know, sir. Mr. Gupta. One second. Please. Take your seat. Take your seat. The kind of gesturing in which some members have engaged cannot be overlooked. I would urge the honorable members to maintain decorum. I am prepared to give floor to every member concerned. There is a point of order from Mr. Pathak, but he has failed to give which judgment. One second. Let Mr. Pathak continue. Mr. Pathak, 1 second. Bear out your assertion. Sir, I'm just. You have read 238. Right, sir. I have noted it. Right. Can you give the fact foundation of it? Fact foundation, sir. Member Later fact foundation on the table if you have. against जो matter sub judice है, उनका नाम बार-बार लेके allegation लगा रहे हैं. What? I fail to understand, Mr. Patel. What is your point of order? I will table it, sir. I will table it. Sir, I have a separate point of order. I will table it, sir. I know you will have Mr. Raghav Chadha, and you may have a better point of order. But first, allow that member to, in his own right, to make out a point of order. I will, sir. I have raised the point of order under Rule 238, and I will table it. Okay, noted. John Bitas, Dr. John Bitas. Sir, rule. Your point of order. Sir, please. Rule 240. 240. 240. I am reading, sir. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance, he is persisting in irrelevance, or tedious repetition either of his own arguments, repeating again, or of the arguments used by other members, Trivedika arguments. I get your point. Dr. John Bitas. To discontinue the speech. Dr. John Bitas. Sir. You are thinking for a moment that you are the chairman. Your misfortune is, I am the chairman. I have never called out such attention. Take your seat. Mr. Raghav Chadha. Allow Mr. Raghav Chadha. I have 2 points of order. No. Only Mr. Raghav. And the last one. I have two separate points of order. You first raise one. I heard him. He has no point of order. We can't allow time to be so utilized. Please, Mr. Raghav Chadha, go ahead. Sir, my first point of order is Rule 110, which is, sir may have 110. Go ahead. Sir, Rule 110, which is the scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or on the rejection of the bill. In making a speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of his arguments. मैंने कहा कि 437 जो गलत नियुक्तियां हुई हैं, जिसको एलजी ने निकाला है, ऐसी नियुक्तियां जो इन्होंने अपने एमएलए, अपने पार्टी के लोगों के रिश्ते नातेदारों को की, जिसमें ना सर्विस कमीशन लिया, ना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लिया, ना यूपीएससी की,
इस तरह की धांधली इन्होंने की है, असंवैधानिक कार्य किए हैं, इसकी वजह से असीम स्थिति पैदा हुई है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस वाले मामले में जब इन्होंने फंड का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस के लिए पैसे नहीं है। ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, मान्यवर, ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, ये अपना प्रदर्शन चाहते हैं। मान्यवर, इनके 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता जेल गए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा। देखिए, I'll give you the list, sir. Okay, honorable member will put it on the शिक्षा table. मंत्री शराब घोटाले में, स्वास्थ्य मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में, सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में, संदीप कुमार राशन के बदले रेप घोटाले में, लॉ की फर्जी डिग्री पर जितेंद्र तोमर जेल गए, असीम मेंबर Honorable member has already been directed to put it on the table of the house. He will do it. मामले में He will do it. जेल जा चुके हैं, विधायक प्रकाश केजरीवाल जेल जा चुके हैं। इनके नेताओं Mr. की Raghav लिस्ट लंबी Chandra, है। one second. Did you not hear earlier speeches? No, you are right. Just tell me, 1 second. Don't enter into an argument. You have made your point. Take your seat and listen to it. The ruling is, गुप्ता जी, जाने वालों के नाम बताओ। गुप्ता जी, मुझे आपके स्वास्थ्य की काफी चिंता होती है कि नहीं है? आपका वजन ज्यादा है, मनीष आप बहुत एजुकेटेड होते हो। सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? जितेंद्र तोमर जेल गए कि नहीं गए? पार्टी जेल गए कि नहीं गए? कॉन्फ्रेंस में अहमद बिल्डर जेल गए कि नहीं गए? अमानुल्लाह खान जेल गए। ये भ्रष्टाचारी और अराजक तत्वों के सरदार है। ये अरविंद केजरीवाल इनके सरदार है। मान्यवर, जब अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। मान्यवर, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए। इन्हें पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अब ये दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री मानकर अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। और तो और इनकी एरोगेंस देखिए, इनका मेगालोमेनिया देखिए, कितनी पराकाष्ठा है। ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं। इन्होंने टीवी पर कहा है दिल्ली का मालिक। क्या बात है। इस तरह के एरोगेंस वाले व्यक्ति पर अंकुश, सेवाओं पर अंकुश निश्चित रूप से केंद्र सरकार का होना चाहिए। मान्यवर, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी विनम्रता देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर मेरे 3 मिनट और बाकी हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं और ये मालिक कहते हैं। ये अंतर है। और इस सोच के अंतर के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों का कल्याण करते हैं, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते हैं, अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, और ये दिल्ली का नाम डुबोते हैं और देश का नाम बदनाम करते हैं। मान्यवर, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री है। मान्यवर, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। मान्यवर देखिए, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। ये चालाकी है। इसका क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय ये है कि अगर घपले घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो मंत्री जेल जाए, अधिकारी जेल जाए, मुख्यमंत्री साफ बचे रहे। ये चालाकी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और अधिकार पूरा रखना चाहते। और इनको सपोर्ट कर रहे कांग्रेस के लोग, इनके राहुल जी ने भी यही किया है। राहुल जी भी यही करते हैं ना, पार्टी की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेंगे नहीं, अधिकार पूरा रखेंगे। ओके मिस्टर केजरीवाल जी ने राहुल जी से सीखा है या राहुल जी से श्रीमती महुआ माझी, श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। महुआ माझी, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से
इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और हमें लगता है कि यह बिल अलोकतांत्रिक है। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करने का जो प्रयास Mr. Jain, Mr. Nothing will go record. बिल के माध्यम से Mr. केंद्र सरकार द्वारा किया nothing जा will go रहा है record. Please उससे take the तमाम seat. विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं। एकाध विपक्षी पार्टियां जो किसी विवशता के कारण खुलकर नहीं बोल पा रही है, वे भी शायद अंदर ही अंदर चिंतित है। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात से है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, न कि केंद्रीकरण। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अधिनायकवाद को बढ़ाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन किया था। सब जानते हैं उसका हर्ष और उनका परिणाम क्या हुआ। अभी जो भारतीय स्टेट का नेचर होता जा रहा है, वह वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भी अगर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र अपने हाथों में लेकर उन्हें इतना पावर दे देगी, तो लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह खतरनाक होगा। इस बिल के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को असहाय और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाद उन दूसरे राज्यों की भी बारी आ सकती है जब जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं। जब केंद्र ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेंगे तो उसी के इशारे पर उन्हीं की आइडियोलॉजी इच्छा के अनुसार वे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इससे संस्कृतों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाएगा, फिर तो जनतंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो पावर स्टेट्स के हाथों डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसे अगर सेंट्रल अपने ही अधीन ले लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रहेगा। आप सोचिए कि कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल, क्लर्क, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर सबकी जरूरत पड़ती है। और Mr. Muralidharan, Mr. Muralidharan, प्रिंसिपल ही चाहे कि हम पूरे कॉलेज को चलाएं, तो क्या वो कॉलेज चलेगा। उसी तरह से वर्तमान केंद्र सरकार केंद्र की रवैये से झारखंड जैसे छोटे राज्य भी भयभीत और चिंतित हैं। उनकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। पिछले दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर लिया था। आप लोगों ने बिना यह पता किए कि उससे जंगलों में रहने वाले जनजाति आदिवासी इससे कितनी बड़ी तादाद में अफेक्टेड होंगे, इसका उन्होंने विरोध किया था। यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा था, लेकिन उनकी संस्कृति भी इससे नष्ट होने वाली है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर इस तरह के कानून भी पास कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के दृष्टांत विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में देखे जा रहे हैं। कई विधायकों को डरा धमका कर, कभी लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास लगातार सत्ता द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली का यह बिल पास होने पर दूसरे राज्यों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। इस बिल से छोटे राज्यों की स्वायत्तता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गलत दिशा में डेमोक्रेसी को ले जाया जाएगा। अफसरों के माध्यम से चुनी हुई राज्य सरकार को में खौफ पैदा करने का यह प्रयास असंवैधानिक है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सवाल यह है कि जिन्होंने शाबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संसद में बदले जाने पर सवाल खड़े किए थे, उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट की माता कहाँ चली गई। दरअसल यह दिख रहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के दूसरे पायों को लगातार कमजोर कर रही है। सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं। और मणिपुर जैसे राज्यों में जहां पर आप केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, वहां हम लोगों ने जाकर देखा कि वहां क्या हश्र हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है वहां पूरा आग लगा दी है। और यह हरियाणा में भी हो रहा है। झारखंड को भी बार-बार परेशान किया जा रहा है। श्री अजीत कुमार भुयान 4 minutes. श्री अजीत कुमार भुयान 4 minutes. Thank you, Chairman, sir. It is difficult to place my points in such a short time. So I would like to read because reading is faster than speaking. Go ahead.
Chairman, sir, spirit of our constitution lies in cooperative federalism. Our constitution is not unitary. Dr. B.R. Ambedkar, participating in Constituent Assembly debate, had said, the states under our constitution are in no way dependent upon the center for their legislative and executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. He further said, the chief mark of federalism, as I said, lies in the partition of the legislative and executive authority between the center and the units by the Constitution. This is the principle embodied in our Constitution. It emerges from Constitutional Assembly debates that India adopted a federal model in which union and the states were meant to operate within their assigned legislative domain. The legislative domain of the states is exclusive and cannot be interfered by the union. Sir, federalism is soul of Indian Constitution, and that is how democracy prevails despite anarchical attitude of few leaders. Chairman, sir, I stand to oppose the bill not because of political alliance, but to empower the smaller states. As we all are aware that similar states of Northeast region and Goa are threatened by the might of the center, and they have to depend on the center all this time. Sir, if the mandate of the people will not be honored, how we can claim that federalism is safe in the country? There has been established norms and traditions for the government of Delhi, but suddenly the government led by Modi Shah Dio decide to derail the norms. The party which Modi Shah Dio belonged had been champion of more autonomy to the Delhi government, but now the Dio is banned to bring the Delhi government to the level of municipal government. Sir, several Northeast states have been vying for more autonomy, and there's a high level of fear that they will lose some special provision enshrined in the Constitution if the center continue to concentrate more power at the cost of the states. Sir, what has happened in Sikkim by diluting Article 371 to bring non-Sikkimese subject citizens under tax rebate has agitated the mind of Northeast states. Sir, I conclude by saying that small is beautiful, and center should not bulldoze its might on the small entity. The mandate of small and big is the same in democracy, and that is how federalism has been taking part for India and outside India. Thank you, sir. Shri Surendra Singh Nagar. धन्यवाद सभापति जी। 15 minutes. मैं आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। माननीय सभापति जी, केंद्र सरकार को संविधान के तहत जो अधिकार है उसी के तहत ये बिल आज पार्लियामेंट में लाया गया, और ये बिल भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान के लिए बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसके चेयरपर्सन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी भावनाओं के अनुसार ये बिल लाया गया है। ये बिल जिस पर चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी राय रखी, संघीय ढांचे की भी बात, लेकिन यह बिल इस तरीके का संघीय ढांचे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के कई देशों में इस तरीके की व्यवस्था है। चाहे आप
ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अमेरिका, बहुत से देशों में ये व्यवस्था है। और अमेरिका में तो ये भी व्यवस्था है वॉशिंगटन डीसी में कि वहां कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि चुन के भी नहीं जा सकता। और यहां तो हमारे आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो यहां चुनकर आए हैं दिल्ली से। देश की लोकसभा में 7 सदस्य लोकसभा के लिए चुनकर दिल्ली से आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में है। लेकिन ये व्यवस्था जरूरी क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अपना महत्व होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके विकास के लिए पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहां लाया गया है। और इस बिल से फायदा क्या होगा? इस बिल से दिल्ली में उच्च स्तर पर जो शासन प्रणाली है वो बनाई रखी जा सकेगी। इस बिल से भारत सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त और सामूहिक जिम्मेवारी और लोगों की जो आकांक्षाएं उन्हें पूरा किया जा सके। इस बिल के माध्यम से राजधानी क्षेत्र में पारदर्शी और प्रशासनिक निर्णय सुनिश्चित करने का काम यह बिल करेगा। माननीय सभापति जी, इस बिल को लेकर हमारे विद्वान वक्ताओं ने, हमारे जेठमलानी साहब ने, सिंघवी जी ने, गोगोई जी ने अपनी बात रखी। मैं लीगलिटीज उनके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। समय हमारे पास है और समय भी हमारा है, आने वाला समय भी हमारा है। आपका खत्म हो गया। ये समय भी हमारा, आने वाला समय भी हमारा है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। माननीय सभापति जी, मैं कई बार चर्चा करता हूं, मुझे भी एक बार इस देश की लोकसभा का सदस्य रहने का मौका मिला। वो दौर 2000, वो पार्टी वो थी जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, यूपीए की सरकार थी, हम भी उस पर आरोप लगाते थे। थोड़ा करेक्शन। अभी आपके पास भी आ रहा हूं, रुकिए आप थोड़ा इंतजार तो करिए आप। अभी इंतजार करिए। अभी आएंगे। माननीय सभापति जी, मेक योर पॉइंट। 2009 और 2014 के बीच इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार थी कि मैं कहूं तो इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के किसी पर आरोप लगे वो 2009 से 14 के बीच में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की जो सरकार थी उस पर आरोप लगे। मेक योर पॉइंट। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पूरे समय 5 वर्ष तक लगातार घोटालों की चर्चा होती रही। और उसके बाद इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन हुआ और वो जब आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर वो आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, भूमिका भी अभी रुकिए आप। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और कुछ आंदोलनजीवी उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ जिन्होंने इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और वो दामाद कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हो। और वो आरोप हमने नहीं लगाया, वो आरोप जो आज आम आदमी पार्टी है जो उसके नेता है उन्होंने लगाया था। और आज आरोप लगा के गलबाई करके साथ बैठे हैं आप। ये आरोप हमने नहीं लगाया था। आज यहाँ पर हमारे दोस्त कृषि सिवा यहाँ नहीं है,
हमारे मित्र तिरछी शिवाजी नहीं है। तिरछी शिवाजी, आप ध्यान रखिए। तिरछी शिवाजी, 2G का आरोप, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, 2G का तत्कालीन ऑनरेबल मेंबर, कौन था? ऑनरेबल मेंबर, किसने लगाया उस पर आरोप? ऑनरेबल मेंबर, तत्कालीन ऑनरेबल मेंबर, जो आज you don't have to address them. Honorable member, confined to decorum, address to the chair. Please address to the chair. I don't, मुझे नहीं लगता माननीय सदस्यगण, उस समय माननीय सदस्यगण, हो सकता है, एक सेकंड, हो सकता है कि मेरा चेहरा बहुत आकर्षक न हो, नहीं है सर, पर नियम की आवश्यकता है कि मेरे को देखकर आप बात कहिए। सर अगर आपका चेहरा नहीं देखूंगा तो मैंने कहा है, आई एम अ वेरी गुड ऑथेंटिक रिफ्लेक्टर, यह पूरी पहुंचेगी। इधर देखिए, माननीय सभापति जी, बोलिए। माननीय सभापति जी, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसमें जो मंत्री थे वो डीएमके के थे और उन पे आरोप किसी और ने नहीं लगाया था। उनके खिलाफ अगर पीआईएल किसी ने डाली थी, इधर तो पीआईएल डाली थी। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पीआईएल डाली थी। गोल घोटाले में किसने पीआईएल डाली थी? कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पीआईएल किसने डाली? वो और किसी ने नहीं डाली थी। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पीआईएल डाली थी। ये है आपका चेहरा। और आज सभापति जी, और आज हमारे मित्र ऑनरेबल मेंबर, मैं लालू जी को बहुत सम्मान करता हूं। मेक योर पॉइंट। सर अच्छा होता हमारे मित्र झा साहब जब बोले तो 2011-12 की बात, 13 एक बिल आया था लोकपाल का, मुझे ध्यान है 13 में आया था। जो 2013 में जो बिल आया था उसमें अगर आप आम आदमी पार्टी की सच्चाई जो वर्तमान नेता हैं और जो आंदोलन जीवी हैं, अगर उनके बारे में उनके विचार सुन लिया होते तो आज आप उनके साथ नहीं बैठे होते। माननीय सभापति जी, अरे शांति। माननीय सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस टू द चेयर। माननीय सभापति जी, 2000 जब ये आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो आज नेता हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। उस भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में उस समय की यूपीए की जो सरकार है उसके 8 मंत्रियों के नाम थे। और ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, ये आरोप लगाया था उस समय के आंदोलन जीवी जिन्हें कहते हैं, उन लोगों ने उससे तत्काल यूपीए की जो सरकार है उसके मंत्रियों पे लगाया। Take your seat. All of you take your seat. All, please take your seat. Please. Let there be pin drop silence. Good. Professor, you are raising a point of order. There has been a tradition One in the second. 261. There has been a tradition in the house that the members who are not members of this house, they are not referred to. Today, you have referred to the Sri Lalu Prasad Yadav. That
You refer to let me finish. One second, please. Please take your seat. Take your seat. Sir, So your point of, one second. So your point of order is expunction. In Expunction of words, because references have been made to lot many people who are not members of this house. This is going against the traditions of this house. Take it. Suresh, would you kindly please have some patience? Maintain order. 1 second. The honorable member has raised a point of order. Honorable members, honorable member Professor Jha has raised a point of order. Similar point of order was raised by leader of the opposition. And when a point of order is raised by leader of the opposition, it is raised at the highest level. I had reserved my ruling on that, and then I had come back to the House. I had indicated to the House everything about the issue. Perhaps the professor has not read it. You read it, you'll get your answer. Please go ahead and maintain order. Please. माननीय सभापति जी, Address the chair. Yes, yes. No, every time, Mr. Nagar, you look at that side. I will take care of it. Look at this side. And make your point. It will be more impactful. सभापति जी, केवल मैं सिर्फ मैं ये जिक्र इसलिए किया कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बात किया। आपको भी पढ़ा रहे हैं माननीय सभापति जी। उस आंदोलन के बाद वो आंदोलन ने खत्म हुआ और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, और उस नई पार्टी का जब जन्म हुआ तो उसके नेता उस समय जो अब नेता हैं उन्होंने एक बात कही, और आश्चर्य की बात है कि बच्चों की भी कसम खाई थी, और बच्चों की कसम खा के ये कहा था कि मैं कभी जीवन में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। क्या हो गया? ये खाई थी कसम। और इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मोदी प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया, उनको आपको तकलीफ क्या हो रही है? कांग्रेस में कभी नहीं आऊंगा, किसी में जाएंगे, कांग्रेस में नहीं आएंगे। Mr. Leader of the House, conclude. Please conclude. चेयरमैन साहब, प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया और उन्होंने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से निपटा। बहुत से वादे भी उन्होंने किए, प्रदेश की अपेक्षाएं भी थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में जरूर चला। और वादा, और आखिर इसकी जरूरत क्यों है? ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहना क्यों चाहिए? सभापति जी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इस पूरे दिल्ली के क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक सीसीटीवी नहीं लगे, यहाँ महिलाओं को आज असुरक्षित। और जब कोई घटना घटती है, जब कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी वो, क्योंकि
पलटने में बहुत बड़े पलटीवाल हैं, वो पलटने में बड़े माहिर हैं, वो तुरंत पलट जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं हूं, महिलाओं की सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी। कंक्लूड नाउ, कंक्लूड। और इसके बाद उन्होंने लास्ट 1 मिनट वादा किया कि 30,000 बेड हम यहाँ बढ़ाएंगे। सर, जब कोविड आया, ये क्यों जरूरी है कि ये केंद्र शासित प्रदेश, जब कोविड आया, जब ऑक्सीजन की कमी इसमें पड़ी, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, इस देश के गृह मंत्री ने जाकर इस हॉस्पिटल जाकर व्यवस्था देखी और ऑक्सीजन की व्यवस्था इस प्रदेश की जान बचाने का काम अगर किसी ने जिम्मेवारी उठाई तो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, इस देश के गृह मंत्री ने कुछ जाकर उठाने का काम किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी इसके बाद अभी एक बात कहकर सब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे चले गए हमारे राघव जी, वो कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने प्लीज कंक्लूड नाउ। पार्टी का सुपारी पार्टी, प्लीज कंक्लूड नाउ। सर एक लास्ट में हाफ अ मिनट। सुपारी पार्टी का है, मैं बताना चाहता हूं सुपारी पार्टी। हाफ अ मिनट, 1 मिनट बता दो। अच्छा ठीक है। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Sri Derek O'Brien. Sir, I stand here to strongly oppose this bill. Sir, Mr. Narendra Modi is the first Prime Minister to be born in independent India. It is a unique privilege. Mr. Narendra Modi is a child of federalism. He was the Chief Minister. And we are told a very successful one, some people say he was not good, but whatever, he was Chief Minister before he came to Delhi. He is a child of federalism. Why would a child of federalism mutilate federalism? Why? Why would a child of federalism come to Parliament and in the last 3 years ensure that about 1/3 of the bills passed here in Parliament is anti-federal? Why? Why would a child of federalism sanction 40,000 crores as a special budget for education, for higher education? And from those 40,000 crores, why would a child of federalism give only 700 crores to state universities? Every bill, sir. Sir. Sir, protect me because the time is limited. Sir, 7 minutes. Mr. Modi and his cabinet believe in transactional federalism. And what do I mean by transactional federalism? Quick message first from somebody the BJD might listen to. Mr. Biju Patnaik. Mr. Biju Patnaik said, the center will also have to truly respect the federal nature of our constitution, quote unquote. Sir, you don't do transactional federalism with Mamata Banerjee in Bengal. It won't work. We will oppose your bill, whether you give us the 12,000 crores which you owe us, 7,000 from Manrega, and 4,000 crores otherwise. Sir, transactional federalism chalega nahi. October the 2nd, to fight for the rights of the states and for what is our right, we will not beg. We will have a big rally here for our 12,000 crores. Sir, I want to ask, you are sending delegations, 160 delegations in 30 months.
every time. What do you do in the BJP states? If 3 dogs are barking in Chennai, you will send a delegation there. If 4 cats are fighting on the street in Bengal, you will send a delegation there. My question is, how many delegations do you send to Uttar Pradesh, which has had the highest number of murders in this country? How many delegations do you send to Assam, which has the highest crimes against women? How many delegations do you send to Madhya Honorable Pradesh, member, which has the crimes against children? One second. One second. Everyone can speak whatever you want. Allowed to speak on the bill. One second. Please, one second. Please, take your seat. Take your seat. Please, better. Yes, sir. Honorable member, one second. Honorable member, you perhaps have to be reminded that you are speaking on a subject, and you would recollect that in last 20 minutes, 3 such points of order were raised and attention was invited. It is good for you to make a speech that can be impactful perhaps outside. Here the issue is very categorical. Would you please use your energy and intellect to focus on the issue? Please do that. Sir, please. This is a political house. We will make political points. They cannot be allowed a free run. Sir, yesterday, or the last time No, you will make a political point, the Home Minister but you of can't India get away from the said subject. we have all come together. No, he said we have all come together as India Jeetega Bharat. India Jeetega Bharat. 1 minute, sir. Let me finish. Sir, don't interrupt my flow. No, Mr. Derek, this is not the way to address the chair. Take Sir, your seat I'm for a minute. addressing you. Take your seat. I had told you, one second, I had told you repeatedly, don't engage into this activity. This does no good to anyone. We in the house have to maintain some kind of decorum, at least for the chair. I have given you floor. One second, take it. I hope Sir, you will believe in decorum. Sir, I'm and talking on the to subject, you. on issue. Go I'm ahead. talking to you Go because ahead. we've all come together, according to one theory, is because we are all for corruption. Look who's giving us lectures on corruption, sir. This government has 3 most important ministers: the PM, the HM, and the WM. He's not here today, the WM, the washing machine. Sir, let me tell you. No, sir, let me tell you. Delete it. Sir, please let me tell you. You cannot. No. Sir, please. No, What I do you will do? not allow this On one theatrics. day, sir, you cannot interrupt. Sir, please allow me to speak. Not this theatrics. Sir, what theatrics? This is not the way to engage into this kind of theatrics. Sir, what happened in Maharashtra is theatrics. No, you are in the process. Come on, Ridiculing constitutional functionaries by equating them with a washing machine. No, I did not. What are you saying? Sir, what is going Sorry, on? Mr. Delagobrian. What, sir, only If you don't keep, Sir, do you want to clock the time down? if you don't keep Do you want to to the clock the time subject, down? you may forfeit your right to make an address. You can't do it. You have to confine to the rules. Sir, Within the rules. Sir, This is not done. This is just not done. My time. Sir, Conclude sir, now. This is a government which talks about corruption. Sir, in Maharashtra, 3 weeks ago, these same people were saying that side has got corruption. Now these same people are saying you have always belonged to us. In other words, what? You are supposed to go to jail. Now you are like us. So both of you should be in jail actually. Because that's the logic. So corruption, this is the state of corruption. This government, yesterday we heard in Lok Sabha, is telling us about dynasty. I'll give them a free idea for dynasty. You bring a bill in parliament, stopping every member from a family, saying only one member, one person. Will they bring that bill in parliament? Sir, they will not. They will not. Sir,
Sir, let me finish. Sir, let me. See, sir. Protect me, sir. Sir, protect me. 1 minute. Sir, protect me. Sir, You invite. protect me. You invited. Protect me. Protect me, sir. Sir, protect me. Take your seat. Take your seat, all of you. All of you, take your seat. Give me 2 Take minutes. your seat. Protect me. Let me speak. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Mr. Tiwari, please. We want decorum in the house. Please. Please. One second. Take your seat. Take it. Take your seat. Take your seat. Would you please take your seat now? Honorable members, we started discussion today with an expectation and with fructified also that the decorum will be there in the house. Settle once. Can't you wait for some time? No, before you conclude, one second. Don't conclude in a manner to put everything in disorder. Good enough. Go ahead. Please. Sir, I will not say anything. Last 1 minute. Very good, sir. Last 1 minute. We have a clear difference of opinion here on this bill. That's why even a former prime minister has found it important enough to be present here to come and vote with us on the bill. We acknowledge that. That's why a member of the JDU has come in an ambulance. So we believe, sir. And the last, Mr. Shibu Soren is here, also unwell. He's come here, sir. So I agree. We have a different view on the bill. It's our view. It's their view. Sir, before we end, I want 15 seconds. Sir, 15 seconds. 15 seconds. Miss Kavita Patidar. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। Mr. Derek O'Brien is named by me. I name Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कही थी कि इन्हें देश की जनता के हित से मतलब नहीं है, सिर्फ इनके गठबंधन से मतलब है। इनके ही नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं न गाड़ी लूंगा न मैं बंगला लूंगा। और करनी और कथनी में अंतर देखिए, दूसरी तरफ शीश महल खड़ा हो जाता है, जिसके भ्रष्टाचार की कहानी भाई सुधांशु ने बहुत अच्छे से इस सदन में रखी है। मैं माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से संविधान संशोधन हुए हैं और 69 संविधान संशोधन भी ये लोग ही लेकर आए हैं और उसी के तहत अनुच्छेद 229 AA3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उससे संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं बालकृष्ण रिपोर्ट की भी बात करना चाहूंगी, जिसमें यह साफ कहा गया है कि दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होगी। अभी इन्होंने बहुत से हमारे अपनों की याद दिलाई, कुछ याद मैं इनको भी दिलाना चाहूंगी कि उस संविधान संशोधन में तत्कालीन गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे, उन्होंने इस बाल कृष्ण समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया था और अपने वक्तव्य में कोड किया था कि हम इसे अपनाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं अपनाएंगे। ये लोग इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि इनका सिर्फ हंगामा करने का मकसद है। ये देश के हित की बात कभी नहीं कर सकते। अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर की थी, जिनको ये लोग भाई 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 कहते हुए यहाँ पर संगठित होने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एक सदस्य ने यह सदन में जवाब दिया था कि दिल्ली के विजय से केंद्र की सरकार विचलित हो गई है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी
कि देश की करोड़ों जनता ने माननीय मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। वो दिल्ली की विजय से विचलित नहीं है, बल्कि दिल्ली की आप सरकार की कार्यशैली से विचलित है, इनके भ्रष्टाचार से विचलित है, इनके कुकर्मों से विचलित है, दिल्ली की जनता के कल्याण के कारण विचलित है। आज महाभारत का भी वो दृश्य की बात कही गई, मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि महाभारत में एक दृश्य और है, एक वक्तव्य और कहा गया है कि जब जब इस धरती पर अधर्म होगा तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा। उसी प्रकार दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाने के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, माननीय अमित शाह जी को आना पड़ेगा, संशोधन बिल लाना पड़ेगा और इस संशोधन बिल के आधार पर दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाना पड़ेगा। ये केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये तो वही बात हुई कि जिनके खोटे सिक्के नहीं चले बाजार में, वो कमियां निकाल रहे हैं सोने के किरदार में। ये सोने का किरदार है, कितनी भी आग लगा लो तब कर और निखर कर ही बाहर आएगा। माननीय महोदय, मैं पुरजोर इस बिल का समर्थन करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को दिल्ली के इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर गंभीरता पूर्वक इस बिल को लाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि धारा 370 को हटाकर देश को जोड़ने वाले हैं हम। अब आपकी नीतियों से देश टूटने नहीं देंगे। धारा 370 को जोड़कर, धारा 370 को हटाकर देश को जोड़ने वाले हैं हम। अब आपकी नीतियों से देश को टूटने नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ अलग है जनाब। ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे, ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रामदास अठावले। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस। सभापति महोदय, ये सभागृह में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पर चर्चा हो रही है। नहीं, भारत के संविधान ने दिल्ली केंद्र के सरकार को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार छीनने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए माननीय अमित भाई को ये बिल लाना पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसी सेंट्रल हॉल में रोज संविधान सभा होती थी और उसमें दिल्ली जो है केंद्र शासित थी और दिल्ली को मतलब दिल्ली सरकार को मतलब केंद्र सरकार को दिल्ली को हैंडल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये संविधान सभा ने पास किया है। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि क्यों आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब आप लोग संविधान को मानने वाले हैं, साहब बोलते हैं। आपने 70 साल तक राज किया है। जब आपका राज था तब भी मतलब अधिकार आपके पास थे। जब आपकी सरकार थी तब वो अधिकार आपके पास थे। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी मतलब अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अधिकार केंद्र सरकार के पास थे और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, अच्छी बात है। केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन में वो भी रहे। उसके बारे में हमको बड़ा आदर है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन किया। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी? नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी।
नरेंद्र मोदी जी जानते जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। तो ये जो बिल है नहीं ठीक है। हाँ तो सभापति महोदय, ठीक है, सभापति महोदय ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की रक्षा करने वाला ये बिल है। मैं सभी सामने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ था, अब मैं नहीं हूं, तुम उनके साथ क्यों जाते हैं? तो ठीक बात है, आप सब लोग एक साथ आए हैं। लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोकतंत्र में आपको हमें हराने का अधिकार है, हमको तुम्हें हराने का अधिकार है। तुम इनको हराते हराते सत्ता पर बैठे। अब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी किसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का संविधान बदलने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करते हैं। और इसीलिए मैं आपको ऑनरेबल मिनिस्टर, हाँ, तो मुझे लगता है कि सर ये जो बिल है भी आप लोग बिना मतलब हंगामा करते करते आप हंगामा करके बैठो, उधर ही बैठो, हम इधर बैठने वाले हैं। तो इसीलिए आप शांति से चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे का सुनना भी चाहिए। और आप जब से आए हैं तब आप डांटते भी है, सब पे प्यार भी करते हैं। हाउस भी चला रहे, बहुत अच्छी बात है। हाउस भी चलना चाहिए, हाउस भी चलना चाहिए। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी चलना चाहिए, मतलब ये सरकार भी हमारी चलेगी। और इसीलिए मैं, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। और अपोजिशन को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और ये बिल एक मत से सम्मत होना चाहिए। ये मैं आपको अपील करता हूं। जय भीम, जय भारत। Honorable members, as per the list of business, the statutory resolution disapproving the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 was listed in the name of 12 honorable members. As per practice and parliamentary conventions, the names of the listed members are called by the chair successively, and the member who moves them thereafter become infructuous. The mover of the resolution also gains the right to reply after participation of members in the discussion. In the instant case, Shri A.D. Singh has moved the statutory resolution, and therefore I now call upon Shri A.D. Singh to reply to the discussion. Thereafter, the Honorable Minister will reply to the debate. Shri A.D. Singh. Sir, with your permission, I move the statutory resolution that the House disapproves the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, brackets number 1 of 2023, promulgated by the President on 19/5/2023. I will start with the constitutional bench in DC Vadhva versus State of Bihar has held that the power of the executive to promulgate an ordinance should not be perverted to serve the political ends. And I heard the debate from both the sides, from our side and from the side of the ruling party. And it reminds me of the BJP party saying that we are a party with a difference. Hence, I really congratulate the Honorable Home Minister that you have brought a similar bill with a change, which has never occurred in any democratic setup. And I will not repeat many things that Singhvi ji has said or Chidambaram ji has said and many other members have said because it will be too repetitive. But the most peculiar, I want to ask the Honorable Home Minister, then what is the sanctity of a party manifesto? A party manifesto says that if we come to power, we will try to fulfill these aspirations of the people. So the bill is so peculiar that the triple chain about whom many of our
colleagues in the opposition have said, that means that it will be the work of the Lieutenant Governor and the Union Home Ministry to implement the manifesto of the Aam Aadmi Party, because as it is very clear that the bureaucrat will not listen to the Chief Minister and his other people. And in any case, I have a very low opinion of the IS in this country, because a whole lot of my friends have been at the helm of power. I don't want to name them. So the steel frame of British imperialism is not even the plastic frame of Indian democracy. So besides, the service is such that I am sure I am safe, and I agree, sir. So IS denotes all these three things. And they are too, instead of subservient to the social goals of the society, they are normally subservient to the all legal and not so legal acts of the ruling party, whether it is our side or whether it is that side. So, so it is a very peculiar situation. We talk of the ruling party, talks of, and we also talk of the democratic values that was enshrined in Bihar's Lichvi dynasty. We shout all over the world that we are the largest democracy. One of the opposition, one of the ruling party ladies just mentioned that we did a great job by abolishing 370. But let me tell you, let me brief the House that under the Congress rule and even under Atalji's leadership, the 370 was diluted so much that it only remained a piece of paper. And unless we win the heart of the people of Jammu and Kashmir, nothing, because after 4 years, we are still making people house arrest there. So I do not know whether we want to serve as a democratic nation, or we want to put it that we really want to finish it, the democratic sentiments. One of our senior ministers